Yeah. Good afternoon, all the participants, and today's resource person, Dr. Seema Rawat ma'am, Vice Principal, MV Mandali. MV Mandali's College. I welcome you all for 7-day. Axis Bank का data इतना डाला. 7-day of our research methodology workshop. Now we request Dr. Lata Krishnan madam formally introduce our resource person. Thank you. A very good afternoon to all the participants, Assistant Professor Tushar Pawar sir, and our resource person, Dr. Seema Rawat. It's indeed our privilege to have Dr. Seema Rawat with us. Madam is a very, very busy person, and she is an eminent researcher. As far as her educational qualifications are concerned, ma'am is an MCom, B.Ed, UGC NET, PhD, PGDFM, DBM. She is currently the Vice Principal of MV Mandali's Colleges of Commerce and Science. She has a work experience of 15 years. She's also the IQAC coordinator of MVM College. A brief academic profile. She organized various national and international conferences and worked as editor for various ISBN journals. Number of papers published at national and international conferences and journals is 25. Research papers published in UGC CARE listed journals, 5. Book published for BAF, BMS and BFM, service marketing, principles of management, financial management, auditing. Invited as research person at various colleges for academic guidance and research guidance. Dr. Seema Rawat is passionate about research. She is a very able administrator, but a researcher at heart. I had the privilege of coordinating and connecting with her when Mahatma Night Degree College had a faculty exchange program with MVM Mandali's College, Andheri. It was indeed a pleasure working with you, Rawat ma'am, and we're so happy to have you as our resource person today. I welcome you to today's session, and I wish you all a very productive day ahead. Thank you. Yeah, Over thank to you so Tushar. much. Thank you, Lata ma'am, for your kind words. I request Seema ma'am to take over the charge of the session. Okay, thank you, Tushar sir. First of all, thanks to Mahatma Degree College and Tushar sir and Dr. Lata for your kind introduction about me and for inviting me and giving this platform to me where I can interact with all research scholars and PhD pursuing research scholars. So it's a privilege for me for that your college has given me this platform. So let's begin with the academic writing. The topic today, which is given to me, is academic writing. What will be the structure of academic writing and ethics in academic writing? So we are going to cover this entire academic writing session in a phased manner. But I want this session not to be one-sided. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि काफी interactive session रहे where my audience, whether it is professors or associate professors or research scholars or whether my students, they should interact. Because जब two-way interaction होता है तो discussion healthy और अच्छा रहेगा. So before I proceed to my presentation, I just want to know my audience. I want from all of you, I think right now I can see here 26 people are there. So excluding me, madam and Tushar sir, I think around 23 people are participants. So I just want from all of you, a few people can come forward and tell me what are your expectations from today's session. I will jot down and during my presentation, I will stress more on those points. So may I have your mic on, please, participants? Just few minutes interaction with you. Ma'am? Yeah, yes, ma'am. Boliye. Ma'am,
Actually, if you tell about the secondary data, it will be nice. Secondary data. Anupa Mystery, madam. Madam, where are you from? I'm actually basically I'm from Andaman Nicobar Island, but I'm doing my PhD in Chennai, Okay. Institute What is your of Higher topic, ma'am? Education. What is your topic? Uh, it's related to HR, Hmm. blended learning in learning and development in IT industries. Okay, blended learning in okay IT industry. So you want to know how to record secondary data during your PhD thesis? Is it like that? What No, exactly? ma'am. Yeah. I have one how I say seminar. So it's on 4th. So I'm confusing to collect means how to present and by the use of secondary data I can, but I'm confusion on this. I'm Okay, so having basically you want to write a research paper and you want to write a research paper secondary database. So you are a yes. little confused how to present it. Yes, Fine, yes. fine. I got your question. So it is a question from Anupa, madam. Definitely, I will during my presentation. I'll go ahead Thank with this. Yeah. thank you. Anybody else? Anybody else? I think किसी को कोई queries ही नहीं. Everybody is aware about everything. Is it so? I just need few more so that I can participants. If you can give me what you are expecting from me. See, if you'll not give, then accordingly, I mean, I will straight away go to my presentation and I will cover what I feel I need to cover. And then probably, no doubt, at the end of session, we will be having a question answer session. But still, if you give me a idea beforehand, that will be easy for me. Anybody else? Okay. So one question I got in between also during my presentation, if you feel that there is something, you can just ask me queries in between. Okay. So I'll straight away go to my presentation. First part, I will be covering academic writing. What is it exactly? Academic writing ऐसी चीज है जो हम सब कहीं ना कहीं कर रहे हैं as a student, as a research scholar, as academician, and we all are aware about this concept. But in-depth knowledge of this concept is very important because लिखने के लिए सिर्फ लिखना जरूरी नहीं होता है. We need to understand what exactly the format should be, how it should be, what need to be done, what need not to be done. That's very important. So first phase mein I Excuse will me, be Seema covering. ma'am. Yeah. There is one Yes, sir. question in chat box. Sure, I'll go to chat box. Okay, how to write thesis according to APA? Yeah, sure. That I'm covering at the end part. I will be covering on thesis APA. Sure, I will. I'll show you some samples also at the end. Who's this? Santosh sir, Santosh Shilke. Okay, thanks, Santosh ji. Sir, are you? May I know? Are you a research scholar pursuing your PhD? He has some network issue. Shrike sir, Yeah. you can write in chat box. It's okay, Shilke ji, no problem. When we'll go to the thesis wala part na, there I will definitely try to sort out your queries. I'm covering this APA style and citation style. Okay, so basically I'll give you a brief view what we are going to study today because No, sir. પેલું બત્રીસ word article છે આ બરાબર છે. Shilke sir, I think there is some network problem. Your voice is dragging. No problem, sir. I will cover, sir. So whatever your queries at the end, if your network issue get resolved, we will talk to you. No problem, sir. Okay, so I'll give you a little bird eye view what we will be covering today. Today, I will be talking about academic writing. After that, academic writing, basically, I will be focusing on thesis. Research papers, research proposals, a small part I will be covering, but at the end I will be covering, I will be focusing more on how to write thesis, what should be the structure and what should be done. I will be also sharing
few tips with you, which whatever little knowledge I have gained from my own PhD thesis, from my friends and colleagues, those who have completed their PhD. So I keep on interacting with the people, and whatever little knowledge I have gained, on the basis of that, I will be sharing few tips with you. Okay, and at the end, we will be also covering ethics in academic writing, that is plagiarism, and how to avoid plagiarism and like that. Okay, so I will start. I will straight away go to my presentation. Just a minute. Let me share my screen. ये बुड्ढा आ गया बुड्ढा मैं Give me कौन a हूँ minute. मैं कौन हूँ Screen. I request all the participants kindly mute yourself in the session. So I will straight away go to the presentation. Okay. So first of all, let's understand what is academic writing. Basically, अगर आप बोले nutshell में or in an informal way, we all are aware about academic writing. So, but before we know, because we have been writing proposals, we have been writing research papers and all that. So academic writing एक concept है जो, since we all are educationalists, we all belong to education field, तो academic writing से हमारा पाला पड़ ही जाता है कहीं ना कहीं. Okay, but formally academic writing is what it should be included, what it should not get, what need to be avoided while you're writing academically. That's very important to understand. So before we proceed further, let me give you a small gist about what is. So yeah, there is some disturbance in between. If I can, participants. Somebody, तुषार सर किसी का तो mic on है, which is quite distracting. Yeah, fine. Thank you, sir. So any writing for academic purpose is called as academic writing. Now, when I talk about academic purpose, it could be a book, it could be a research paper, it could be an article, it could be a reference, or it could be a PhD thesis, it could be a synopsis. So there is lot many things which are involved into when I talk about academic purpose. So any writing which is related to academic purpose is called as a writing for academic purpose. Now, or otherwise, in another way, I can say that the formal style of writing used in university and scholarly publication. So when we write for journals or publications or ISBN book or research conference, or when you're writing test books or reference books for your students, when you're writing PhD thesis, dissertations for your master's degree, all these kind of writings come under the academic writing. Okay. The basic objective of academic writing is to communicate ideas, information, and research. What you think about that particular topic, what is your idea, what information you have, and this information will not come in one day. Information हम एक दिन में नहीं हमारे पास आती है. We collect information from various sources. तो हम सीखते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने कॉलीग से, अपने ऑलरेडी द पीपल दोज हु आर डॉक्टरेट, रिसर्च स्कॉलर्स. वी लर्न फ्रॉम बुक्स, वी लर्न फ्रॉम लाइब्रेरी, ऑल डेटाबेस, और गूगल तो आज की डेट में आपके हाथों में है, तो वी लर्न फ्रॉम गूगल बाबा एंड ऑल दैट. ओके, सो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, उस इंफॉर्मेशन को व्हेन यू प्रेजेंट इन अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड वे, and whatever ideas you have, you put forward to a particular target audience, that's academic writing. Now writing में बहुत सारी चीजें आती है. There are people those who are writing blogs, there are people those who are writing articles, there are people, but this blogs, writings and marketing में जो magazines में लिखना, blogs लिखना, articles लिखना, this is little different from the academic writing. Academic writing focuses only on academics. So your target audience may be student, maybe university, maybe your college where you're serving. So this will be the scope of academic writing. Okay, and basically academic writing involves research. What do you mean by research? I hope we all are, we all belongs to that research area. PhD scholars में हमारे साथ में है. So it's nothing new I'm going to talk, but still, research means re and search. If you see, there are two words in this. One is re, another one is search. Research, आप ढूंढ रहे हैं,
लेकिन आप वो नहीं है जो पहली बार ढूंढ रहे हैं. You are researching. Somebody has already done a search and you are doing a research again on that. Okay, just a minute. I think there's somebody on door. I'm really sorry to disturb. Give me a minute. I'll be back. Okay, so just a minute, let me start it. Sorry. Yeah. So we were talking about academic writing, which is for the purpose of academic writing, publication and research. We were talking anything which has already been done. The research has already been done by people, few research scholars during the last few years. Okay, and you are searching again what they have done, and you are presenting those ideas, adding your new ideas into that, and that's how you are writing. It's always a knowledge base. As I said, first you collect information, you convert those information into the knowledge. आपके पास information बहुत सारे sources से आएंगे. सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास information आती है. WhatsApp से लेकर, social media से लेकर, books से लेकर, you know. So we keep on getting the information, but सारी information आपकी academic writing में use नहीं होगी. Information which is you have to narrow down that information, and the information which is related to specifically to your topic उतना ही आपको academic writing के लिए cover करना है. So your topic may be for a research proposal, your topic may be for a PhD thesis, whatever it is. But yes, writing is always knowledge based or a research based, I will say. Very important. Academic writing should always be evidence based. It's not like कि आपके जो दिल में आ रहा है आपने लिख दिया because आपको अच्छा लग रहा है. And I assume, I feel, my opinion, इधर वो नहीं चलेगा. Okay, so you have to, you should have a evidence. Evidence may be based on the earlier research done on that. So suppose if I say today, just a minute. Arav, can you close this door? Yeah, thank you. So it should be evidence based. जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा ना, तो कोर्ट में जब आप आर्गुमेंट पेश करते हो, लॉयर जो होते हैं, when they present their argument, judge will not listen to your arguments or not accept your arguments unless and until आप उसके सामने कोई एविडेंस रखो. भाई मेरे पास सबूत है, ये सबूत है और ये गवाह है. तो जब आपके पास सबूत और गवाह होते हैं तब जज आपके आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करता है. Similarly, in academic writing also, especially when you are doing research, all your arguments, whatever claims you are making, आप अपने रिसर्च में जो भी क्लेम्स लिख रहे हो, फलाने फलाने डेट पे ये हुआ था, फलाने फलाने जमाने में ये हुआ था, फलाने फलाने रिसर्च स्कॉलर ने उस टाइम पे उस एरिया में ये फाइंडिंग किया था, whatever you are claiming, it should be based on evidence. Now ये एविडेंस कहाँ से मिलेगा? ये एविडेंस आपको मिलेगा लिटरेचर रिव्यू से. So academic writing is always evidence based. It's not your personal opinion, it's not your personal perception. It should always be evidence based, and it should be have a proper reference also. Then only it's academic writing. When you're writing, you need to be very specific about the word choice. When there is a difference. See, structure जो होगा proposal लिखने का, research paper लिखने का और thesis लिखने का, more or less it is same. But you have to be very clear कि आपको कितने तक उसको limit करना है. And you have to be very precise about word choice. Don't keep on writing क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आप 2-2, 4-4, 10-10 पेज, 20-20 पेज लिखे जा रहे हो. So research proposal लिखने के लिए भी there is a limitation. आप उसमें 300-400 पेज नहीं लिख सकते हो. Research paper लिखने के लिए भी there are certain formats and limitations. So you should keep in your mind that what you are writing, for what purpose you are writing, and choose very, very important words which will be suiting and fitting to your research purpose. Don't use unnecessary words. So you should be precise, quick, and crisp. आपका research work होना चाहिए. It should be logically organized. Like I earlier I was saying, research paper लिखना हो या thesis लिखना हो, उसका एक proper structure है. Structure is more or less same in all the universities all over India. Okay, and keeping mind in that structure, you should design your research in such a way कि आपके जो भी matters है वहाँ पे fit होना चाहिए उस structure के अंदर.
So it should be logically organized so that reader, those who are reading, जो आपका पढ़ रहा है लिटरेचर जो आपका पढ़ेगा या थीसिस जो आपका पढ़ रहा है, वो जब शुरू से पढ़ना शुरू करेगा तो उसको वो लॉजिक और सीक्वेंस वो समझ में आते रहना चाहिए. इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग to yourself and to the reader as well. Okay. And it should be always in an impersonal tone. Impersonal tone means you will not say that you should do it, or I'll say it's my opinion, as per my recommendation, as per my findings. Or for example, if I say that as a teacher, you should be fair with students. Always do not use such kind of statement which is a second person statement. Rather than you can write, a teacher should be fair with students. Okay, or you can write one should be fairly treat students. So do not specifically use second person, or do not use personal tone into your writing, because ये यहाँ पे personally किसी के लिए आप communicate नहीं कर रहे हो. You are not writing letters. Okay, so there should not be any personal communication. It should be thoroughly a formal style of writing. That's what I can say. So this is all about academic writing. Now we understood the concept of academic writing, but academic writings, if I say, I can divide academic writing in two parts. One, I will say academic writing for students. Now, when I say student, it could be our student, हमारे बच्चे जो project लिखते हैं, जिनसे हम project करवाते हैं, TY level पे, वो हो सकते हैं. या फिर when I say student, it could be you or me, those who are research scholars, those who are writing thesis or research paper for universities. Okay, so हम जो research scholars हैं, they are also students. So student academic writing में I can say abstract is a part, literature reviews में आ जाता है. How to write bibliography, that's again a different skill. Conference paper when you are writing research paper for journals, ISBN journals, or UGC care listed journals. When you write research proposals, dissertations when you write, thesis when you write. So हम अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये सारे जो words हैं, we know all these words and we have been interacting with these titles since long. Okay, so ये जितने भी हैं ये आते हैं students academic writing. The another part is the expert academic writing, where you need not some but very very good and in-depth knowledge to become expert academic writing. मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे ये स्टूडेंट एकेडमिक राइटिंग के लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं, यहाँ भी नॉलेज चाहिए. ओके, बट कंपेयर टू दिस, व्हेन यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट एकेडमिक राइटिंग, you need a more in-depth experience and knowledge and skill in this field, and that comes when you write research paper for academic journals and when you write research textbook or when you write a reference book. So मैटर वही है, academic writing ही है दोनों, but yes, अगर आप रेफरेंस बुक लिख रहे हो, टेक्स्ट बुक लिख रहे हो, तो आप व्हेन यू आर फ्रेशर, आप 2-3 साल ही आपको टीचिंग फील्ड में हुए हैं, नया नया आपका सब्जेक्ट है, अब वहां पे आप अगर टेक्स्ट बुक लिखने की कोशिश करोगे तो probably, I'm not saying it's impossible, but you may find many difficulties, because I remember when I started writing, by the time I have completed many research papers. So पहले आप शुरुआत करो कि research papers लिखो. When you get little bit knowledge and experience, then start. जब आपको experience मिल जाए, जब आपको पता चल जाए कि आपका target audience क्या है, आप क्या करना चाहते हो, when you're clear in your thoughts, the topic, then you go for expert writing. So expert writer बनने के लिए time लगता है, but yeah, it's not impossible, So you should start with this small level of writing research paper, research proposals, and like that, and then jump onto this after you gain a lot of knowledge and experience. So this is academic writing. ये सारी चीजें मैं cover करूंगी थोड़ा थोड़ा nutshell में, but I will be focusing more on thesis writing at the end. Before we jump into academic writing, I think we should keep in mind certain points, क्योंकि जब आप कुछ लिखने जाते हो और लिखने के बाद में वो सब खराब हो जाए और बाद में आपको पता चले कि अरे यार ये तो गलत हो गया, फिर उसके बाद में वापस से आप रिवर्क करो. सो बेटर बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, सर्टेन थिंग्स यू शुड बी अवेयर, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है. तो अगर वो चीजें आपने याद रखी है तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग इन अ राइट ट्रैक. यू शुड नो व्हाट इज योर डेस्टिनेशन ना, आपको कहाँ जाना है. तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप जब ड्राइव करोगे
तो आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते से जाओगे, या पहुंचोगे तो सही लेकिन लेट पहुंचोगे. Okay, so ऐसा ही है academic writing. If you know your way, if you know your path, if you know what hurdles may come, if you know all the tips, what to include and what not to include, and अगर ये सारी चीजें अगर आपको पहले से पता है तो your writing will go in a smooth way. Okay, so I'll just go through one by one what tips I can give you and what points you should remember when you are writing. Academic writing matlab anything, maybe research proposal, maybe conference, maybe thesis, so all limited focus, especially when you're writing thesis or research paper. You should narrow down your focus. आपका focus एक आपके टॉपिक पे ही होना चाहिए. ओके, यू शुड नो व्हाट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम. आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, और आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके रिसर्च पेपर में और आपके थीसिस में, इट शुड रिवॉल्व अराउंड योर रिसर्च प्रॉब्लम और योर रिसर्च टॉपिक. इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट. When I say, for example, I'll give you a very simple example. See, so you should be full focused. For that, it's very important that you should have a proper planning. You should know what is purpose of your research paper. आप ये research paper क्यों लिख रहे हो? What is your objective? What is your thesis statement? I mean, what is your research problem statement? ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर होंगी तो आपको उसी ट्रैक पे अपना पेपर लिखना है या उसी ट्रैक पे अपना थीसिस लिखना है. For example, when I say problem of unemployment in India, ठीक है, problem of unemployment in India. Now, when I say problem of unemployment in India, it's a very vast topic. It's a very vast topic. उसमें unemployment organized sector में भी है, unorganized sector में भी है, unemployment women में भी है, men में भी है, unemployment rural area में भी है, urban area में भी है, unemployment different states में अलग है. So when I say this kind of vague topic, that unemployment in India, the scope is very, very wide. So what I have to do, मुझे अपना research topic थोड़ा सा narrow down करना पड़ेगा, उसका scope भी limited करना पड़ेगा. For example, इसी को अगर मैं थोड़ा सा reframe करूँ, the problem of unemployment in Mumbai city, or problem of unemployment is somebody is from Andaman, so Andaman का एक particular city or particular area आप ले लो. So क्या हो गया, हमने अपना जो area है research का वो बहुत छोटा कर दिया है. Now I have to, so when I talking about unemployment, so when I'll be writing literature review or something, all arguments or evidence, तो मेरा जो भी रिसर्च है वो अनएम्प्लॉयबिलिटी के नियर बाई घूमेगा. मेरे जितने भी लिटरेचर रिव्यू होंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होंगे. मे बी अगर अंडमान में नहीं तो मे बी मुंबई, मे बी चंडीगढ़, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो उस पर रिसर्च की होगी. So, but my topic ke nearby, when I'm talking about unemployment, I should not go for poverty and I should not go for the other macroeconomics problem. Okay, so आपका topic क्या है, आपका title क्या है, आपके literature reviews जो है, it should be focused to that. It should not go beyond that area. And उसके लिए बहुत जरूरी है that you should be properly planned. आपको plan करना है कि आपका research area क्या है, उस research area में ही आपको सारी चीजें cover करनी है. That's very important, that you need to keep in mind. Unnecessary, unwanted चीजें आप अपने research में डालते जाओगे, it will be definitely very lengthy, of no use. Very important. Hello. Yeah. Somebody. Hello. Yeah. Hello. Can you mute? Yeah. Thank you. I'm not able to trace those voices. Hello. 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 Wait, madam. Just Pradnya Swami, madam. Please mute yourself. Yeah, actually, I was not able to press those voices. Otherwise, I would have. Yeah. Thank you. Thank you so much. Okay. So. Yeah.
So we were talking about limited focus. Logical structure होना चाहिए, whether it's a research paper or whether it's a research proposal or thesis. There is a predetermined structure. More or less सारी universities में same ही होता है structure. So you should be aware about your structure. You know, जब building बनती है तो engineers पहले से उसका blueprint ready रखते हैं और उस blueprint के basis पे they visualize, और even जो घर खरीदने वाले लोग हैं visualize करते हैं कि yes ऐसे ऐसे रूम होगा, इतना बेडरूम, इतना हॉल, और so that they prepare a blueprint. Similarly, research में भी you have to prepare a blueprint. It should be logically organized. आप लास्ट की चीजें पहले और पहले की चीजें लास्ट में नहीं लिख सकते. There is a proper format which we will be discussing later part. So generally अगर आप सारे research papers देखो या thesis देखो, it is majorly divided into three parts. That it should start with introduction, it should have a middle part, that's a body paragraph, and it should end with the conclusion. Now, again, in the body paragraph, there is a variation depending on what you are writing, whether it's a research proposal or a thesis or a research paper. So, but more or less, the structure will be same. You don't write anything without introduction. Don't write anything without concluding. So, this is a logical structure. While you're writing your research paper or a thesis, you should three level structures पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. What should be the overall structure? Overall structure, when I talk about, it should be introduction, बीच का जो part है जिसमें आपका research methodology आएगा, literature review आएगा, findings and all that, and last का part. So it should fit to the overall structure. You should also concentrate on paragraph structures. Paragraph इस तरीके से आपको लिखने हैं कि that should be connected, one paragraph should be connected to another paragraph, or the idea as a wholesome you're presenting should be in one paragraph. दो आइडिया आपने एक ही पैराग्राफ में मिक्स मर्ज करके, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है, पहला पैराग्राफ के बाद में सेकंड पैराग्राफ कुछ और ही बोल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. So the paragraph structure you need to concentrate that. First year. So you need you need to concentrate on paragraph structure. That paragraph का जो structure है, it should be one single idea should be in one paragraph. Okay. Other one is a sentence structure. Sentence जब आप बनाते हो, just see that do not keep long sentences or meaningless sentences, repetitive sentences, and there should be smooth transition from one sentence to another sentence. पहला sentence कुछ और बोल रहा है, second sentence और पहले sentence का कोई logic नहीं है, कोई connection नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. So when you are writing your thesis or a research paper, just see that you are reading and you should be able to have a logic behind entire structure. आप खुद उसको पढ़िए एक बार. अगर आपको खुद को समझ में आ रहा है तो दूसरे को भी समझ में आ रहा है. आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है अपना लिखा हुआ तो दूसरे को भी समझ में नहीं आएगा. It's very simple rule. Okay. Second, as I was saying, it should be evidence based. Whenever you are writing anything, just don't keep on writing. हमेशा साइड बाय साइड उसका एविडेंस तैयार करते रहिए. जैसे कि अगर मैं कोई एक आर्टिकल देखती हूँ, आर्टिकल में मुझे कुछ अच्छा लगा, आई हैव टेकन दैट आर्टिकल, आई हैव पैराफ्राइज दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल में से मैंने कुछ अच्छे आइडियाज मैंने अपने शब्दों में अपने रिसर्च पेपर में लिख दिए. लेकिन वो आइडिया ओरिजिनली मुझे कहाँ से आया? वो आइडिया मुझे आया एक सो एंड सो ऑथर के रिसर्च पेपर से. साइमल्टेनियसली जहां से भी आपने वो सोर्सेस लिया है उसको आप लिखते जाइए एक जगह पे, एंड एट द एंड इट शुड कम इन योर रेफरेंस. बिकॉज अगर कल को अगर आपको कोई पूछे कि भाई ये जो आपने क्लेम किया अपने रिसर्च में कि दिस इज हैपन या दिस इज द फाइंडिंग, या आपने अपने बेस पे किया, कहाँ से आया ये, तो यू शुड बी इन राइट पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन कि भाई मेरा फाइंडिंग नहीं है, या ऑलरेडी एक रिसर्च मैंने पढ़ा था, रिसर्च पेपर सो एंड सो बंदे ने वो डेट पे किया था, उनकी फाइंडिंग है. तो वो आप तभी बोल पाओगे व्हेन यू कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर सोर्सेस. So when you're putting any claim, अगर आप बोलते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन 2010 में इतनी थी एज पर द सेंसस दिस 2001 में इंडिया का एम्प्लॉयबिलिटी अनएम्प्लॉयबिलिटी लेवल इतना था एज पर द सो एंड सो सर्वे, तो वो आप नहीं बोलने चाहिए. वो आपने जिस सोर्स से लिया है वो वहां पे आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा, एंड दैट एविडेंस शुड कम इन द रेफरेंस. ओके, सो डू नॉट राइट एनीथिंग इन योर रिसर्च पेपर और thesis, any claim, any argument for which you do not have sufficient evidence.
And when I say evidence, it's literature review, it's citation, it's reference. So prepare. Okay, when I used to do my PhD research work, so when I used to visit library, तो कहाँ पे भी जो भी आपको बुक मिला, देखा, अच्छा लगा, उसमें से कुछ आइडिया जॉट डाउन कर दिया. साइमल्टेनियसली वन डायरी आई यूज्ड टू कीप, जहाँ पे मैं किस डेट पे मैंने कहाँ से क्या लिया, उसके ऑथर का नाम एंड ऑल दैट रेफरेंस आई यूज्ड टू मेक विद द डेट, so that when tomorrow I'm writing my thesis, I should be able to incorporate that into my thesis. So whether you're reading in a library, whether you're going for an online source, always keep a evidence. Support your viewpoint. What will happen? It will give a credibility to your argument. आप जो बोल रहे हो उसको थोड़ा weightage मिलेगा. अगर आप बिना reference के, without evidence, if you're just putting statements as you feel, as you wish, तो उसका कोई मतलब नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आप कोई व्यू पॉइंट्स दे रहे हो, कोई क्लेम दे रहे हो, और साथ में आप बोल रहे हो कि yes, is it as per the survey of so and so, as per the report of WHO, as per the report of World Bank of this year, अगर आपने वो कहीं ना कहीं दे दिया है, of course उसका सबसे ज्यादा वैलिडिटी है. So always evidence based. Always use formal tone, because you are not writing any informal thing here. Okay, academic writing basically is so avoid using slang language and loose language. जैसे हम डे टू डे लाइफ में अभी बात करते हैं अपने फ्रेंड से, दोस्तों से, फोन पे, व्हाट्सएप पे, वो भाषा आपको यहाँ पे यूज नहीं करनी है. बिकॉज इफ यू यूज दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, इट गिव्स अ वेरी अनप्रोफेशनल, व्हाट डू यू से, अनप्रोफेशनल इमेज आपका बन जाता है. ओके, कि ये जो रिसर्च स्कॉलर है, इस रिसर्च स्कॉलर को इतना नहीं पता है कि इसमें ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. ओके, तो वो एक आपका पहले ही इंप्रेशन खराब हो जाएगा अगर आपने इस तरीके की लैंग्वेज यूज की है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू यूज सिंपल लैंग्वेज. लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि व्हेन यू राइट रिसर्च पेपर और अ थीसिस, द लैंग्वेज शुड बी सिंपल. कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, योर राइटिंग रिसर्च पेपर ना, इट शुड बी हाई फाई टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए. बट आई बिलीव इट शुड बी बैलेंस ऑफ बोथ. दोनों होने चाहिए. यूज सिंपल लैंग्वेज, बट कुछ जगह है जहाँ पे देर आर सर्टेन एरियाज वेयर यू, बिकॉज यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर, यू आर राइटिंग एकेडमिक राइटिंग आप कर रहे हो, तो वहां पे आपका लैंग्वेज का लेवल इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों का ऐसे लगे. So it should be simple, but at the same time you should use some not very high or technical jargon, but कुछ ऐसी चीजें आप यूज करो जो रिसर्च वर्ल्ड में नोन है, दैट यू कैन यूज. लाइक जो रिसर्च की दुनिया में जो लोग हैं, उन्हें पता है लिटरेचर रिव्यू क्या, उन्हें पता है डेटा एनालिसिस क्या, उन्हें पता है डिस्कशन क्या, इंटरप्रिटेशन क्या. So if you write such kind of words, that's nothing to worry. वो आप लिख सकते हो. So it should be a balance, कि कहीं सिंपल भी हो और थोड़ा सा टेक्निकली बैलेंस भी हो, ओके, बट ब्रीफ भी हो. नीदर टू सिंपल, नीदर टू टेक्निकल ऑल्सो. इतना टेक्निकल नहीं हो कि अब जो सामने वाला रीडर है उसको पढ़ नहीं पाए या उसको समझ में नहीं आए. सो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यूज vocabulary and tenses like maintain consistency. I have seen research papers or thesis where people have not maintained consistency in terms of writing. कहीं पे कैपिटल यूज कर लिया है, कहीं पे स्मॉल लेटर यूज कर लिया है, कहीं पे बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज है, कहीं पे एकदम उसको सिंपल कर लिया है. सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन राइटिंग. सो समझ में आता है कि आपने कहाँ कहाँ से उठा उठा के उसको एक जगह पे मिक्स मैच कर दिया. ओके, सो आपको क्या करना है, मेंटेन दैट फ्लो फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड. इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ टोन, इन टर्म्स ऑफ टेंसेस. कहीं पे आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं, कहीं पे आप पास्ट में लिख रहे हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. other thing is that your research should be unbiased होना चाहिए. कई बार लोग ऐसा करते हैं कि दे कंडक्ट रिसर्च, एंड में फाइंडिंग्स आप जो चाहते थे वो नहीं मिला, रिजल्ट आपने जो सोचा था वैसे नहीं मिला, यू गॉट सम अदर रिजल्ट विच यू डिडंट एक्सपेक्ट. तो अभी आप क्या करते हो पता है, जो लास्ट में जो फाइंडिंग है उसके हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स बदल देते हो, और whatever findings you get, you change your hypothesis like that. Please don't do that. It should be unbiased. Whatever you are getting, present it accurately. Even if you're not able to prove your hypothesis, or your hypothesis is not accepted, it's okay, fine. People are ready to accept it. So put logical argument, give your objective standpoint,
unnecessary unbiased biased statement आप उसके अंदर मत डालिए. Don't put your opinion, your perception. It should be based on evidence always. Okay. Put accurate information, especially when you are putting numerical data. जब आप कोई numerical data दे रहे हो, maybe कोई survey का data हो, कोई primary data हो या secondary data भी अगर आप कोई numerical statistical data दे रहे हो, just ensure that you put right information. And do not put emotions or flowery language, because हम academic writing कर रहे हैं and we are not a news channel. ठीक है, नेशन वांट्स टू नो उस टाइप का लैंग्वेज आपको नहीं यूज करना है. ओके, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया हुआ लैंग्वेज उसमें यूज मत कीजिए. हो सकता है प्रॉबेबली द टॉपिक में बी वेरी वेरी अटैच्ड टू यू, आपके इमोशन से अटैच टॉपिक्स हो. सोशल पॉवर्टी हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रेप विक्टिम्स हो गया, तो ये सब इमोशनल टॉपिक्स हैं. सो ये इमोशनल टॉपिक्स हैं और आपके इमोशंस उसमें कहीं ना कहीं आ जाते हैं व्हेन यू आर राइटिंग. But yes, just keep in mind you are writing for academic purpose, so just don't use flowery language or very such kind of language, inflated claims. You don't write. जो है जैसा है आपको यहाँ पे सच दिखाना है, and in a formal way. That's very important. When you're writing something, be clear and precise in your writing. Avoid vague language. ठीक है. Study has been done some year ago. Study on this topic has been done some year. What do you mean by some year ago? So सामने वाले को रीडर को समझेगा नहीं some year के. A lot of studies has been done 10 years ago, like that. So be specific. Don't use vague language. There is lot of research happened on this topic. What do you mean by lot of research? Okay, so कुछ you be concrete with your statement, be concrete your numbers, be concrete. So double meaning words है, vague language है, don't use that. Avoid long-winded academic writing. Like बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, अरे आपका थीसिस कितने पेज का है, तो बोलता है अरे 300 पेज का. अरे थीसिस, अरे आपका 400 पेज का, 500 पेज का है. और फिर वो देखते हैं, अरे इसका थीसिस का पेजेस इतना ज्यादा है, माय गॉड, मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च किया है. It's not like that. I have seen thesis which included 100 and 150 pages also. ऐसे भी thesis मैंने देखे हैं, but the writing is very, I mean जो research work है वो बहुत precise है, concise है and cut to cut है, and the findings and recommendations are up to the mark. So ऐसा कोई रूल नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में कि थीसिस के और रिसर्च पेपर के 300-400 पेज होने चाहिए, और ज्यादा लिखा तो ही उसका मतलब बनता है, तो ही वो रिसर्च है, नहीं तो रिसर्च नहीं. ऐसा नहीं है. You're repeating same thing again, वही दुनिया भर का आप उसके अंदर रामायण महाभारत लिख रहे हो. Don't do that. So avoid long unwinded. If I can say something in 5 words, why I'm using 15 or 50 words for the same thing? जो चीज मैं 2 शब्दों में बोल सकती हूँ उसके लिए मैं क्यों 20 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. So just that's not a good sign, good sign of a academic writer, that आप किसी भी चीज को खींच रहे हो. Don't do that. Be precise. Avoid unnecessary repetition, because what will happen, आप जो आपकी जो findings होंगी लास्ट में आपके conclusion में वो repeat होगा. तो conclusion में you will be giving summary of everything what you have done. So by default तो conclusion में आपका पूरा summary में कहीं ना कहीं आएगा. But ensure that conclusion में जो आप लिख रहे हो, it should be little different from what you have done. It should be summary of entire thesis, but वो summary पढ़ने के टाइम पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पहले ही पढ़ा हुआ है और वापस से आपने वही वर्ड्स रिपीट कर दिए, वही स्टेटमेंट रिपीट कर दिया. Put it in the different way. Avoid that unnecessary repetition. And you have to be correct and consistent. Especially I have seen people, those who have been doing a lot of mistakes in punctuation, grammar, spellings. नंबर में कोई 1 2 3 लिखता है, कोई बुलेट डालता है, आप कहीं पे आपने कैपिटल डाल दिया, कहीं पे उसी लाइन में नीचे फिर आपने स्मॉल लेटर लिख दिया है, कहीं पे हेडिंग का फॉन्ट साइज आपने 14 बनाया है, कहीं पे हेडिंग दूसरी पेज में वही हेडिंग का फॉन्ट साइज आपने 12 बना दिया है. समवेयर यू आर यूजिंग साइटेशन स्टाइल ऑफ एपीए, फिर दूसरी जगह पे आप साइटेशन स्टाइल एमएलए यूज कर रहे हो. तो अलग अलग साइटेशन स्टाइल, अलग अलग नंबर्स के पैटर्न. डोंट यूज दैट. Maintain that consistency throughout your research paper or throughout your thesis. क्योंकि जो रिसर्च गाइड्स होते हैं या जो रिसर्च के लिए आपके वाइवा के लिए आते हैं,
और जो रेफरीज होते हैं जिनके पास आपका रिसर्च जाएगा, वो आई टेल यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, दे जस्ट सी दिस ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट. अंदर का मैटर बाद में पढ़ेंगे, पहले वो ये देखते हैं वो स्पेलिंग कहाँ पे है, कॉमा किधर नहीं डाला, फुल स्टॉप. और इमीडिएटली व्हेन दे कम टू नो दिस कि आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे कॉमा डालना है, स्पेलिंग एरर्स हैं, इमीडिएटली आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है. The first thing which I have observed, my guide, other guides, or the referees, they see this consistency and spellings and all this. Okay, so be very clear, because वो लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं इस फील्ड में ना, कि उनकी नजरों में हमारे से हमको नहीं दिखता, बट उनकी नजरों में पहले आ जाता है, यार इधर फुल स्टॉप नहीं है, इधर कॉमा नहीं है. आई हैव गॉन थ्रू इट अंडर माय गाइड एंड अदर पीपल, बिकॉज वेन एवर मुझे अच्छा लगता था, अरे मैंने बहुत कुछ अच्छा लिख लिया, बट वेन आई यूज्ड टू प्रेजेंट इट, दे यूज्ड टू कम विद 10 डिफिकल्टीज, 10 एरर्स इन दैट. अरे इधर फुल स्टॉप नहीं है, इधर कॉमा होना चाहिए, इधर कैपिटल होना चाहिए. एंड दैट इज हाउ आई हैव लर्न. Okay, so it's not a one-day job. You will learn it gradually with more knowledge and experience. But yes, uh, keep your paper or your thesis under spell check in your Word, and give it to somebody else to read, to expert people, so that ये छोटे-छोटे errors आपकी impression खराब नहीं करे. Uh, Very important, what you are writing, it should be well sourced. As I said, whenever you are going through any article and you want to put that article ideas or viewpoints into your research paper, just put the source. Do not write anything without citing. Always cite your sources. Okay. Citation at both the places. Citation मतलब जब आप लिटरेचर रिव्यू में टेक्स्ट लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, वहां पे भी आपको साइटेशन करना है. और जब आप रेफरेंस, लास्ट में जो हम रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी डालते हैं, वहां पे भी साइटेशन होना चाहिए. So you should have citation at both the places, in the text also, in the reference list also. So ऐसा नहीं हो कि आपने citation में डाल दिया ऑथर का नाम, लेकिन लास्ट के reference list में नहीं डाला है. So both the places keep a proper care कि दोनों जगह पे आपका citation हो. And citation style, keep consistency in your citation style. अगर आप APA style यूज कर रहे हो तो थ्रू आउट आप वही यूज करो. दूसरा जो भी आप citation style यूज कर रहे हो, डिपेंड आपका यूनिवर्सिटीज आपको क्या बोलती है, आपका गाइड आपको क्या बोलती है, बट यूज दैट. सो इट शुड बी वेल सोर्स्ड. When you're citing, citing the literatures in your research paper or thesis, use academic database or use library database. I will discourage using Wikipedia and Google research and all that. Please don't do that. I have seen many students reference लिखते हैं from Wikipedia. So पहले ही पता चल जाता है कि it is just a copy paste job. So don't do that. Please don't use Wikipedia or other Google online में जिसका कोई author का नाम अता पता नहीं है, which is not a proper or authentic source. Don't use that. The best is use academic database. You can use Shodhganga. You can visit university. There are university libraries, and use such data, which is more authentic, So it's very, very important. So this is the key points which you need to keep in your mind before you start writing, because once you know that what care you need to be taken, तो आप उस तरीके से अपनी planning and preparation कर सकते हो. So quickly I'll go through what you have to keep in your mind. So एक तो आपका limited focus होना चाहिए. आपका जितना भी writing है, it should be revolving around your research topic or your problem. Okay. So you should have a limited focus. Logical structure होना चाहिए. That structure we will be discussing in the later part. So just keep in mind that you follow the right structure. Your all claims and evidences, whatever you are writing in your thesis, should be evidence based. Support, there should be proper supporting points to your claims, and it should always be written in a formal language. Do not write loose or slang language, or just maintain consistency in your language. It should be unbiased. Don't put your opinion, your point of view, your emotions. Always put facts. Okay.
Write clear language, don't use vague language, don't use long sentences. Write correct statements, punctuation, spelling, grammar, ये बहुत important है. And put all your sources in the right way in the text as well as in the reference also. And use the right citation style. Do not use unauthentic data. कहीं से भी कुछ भी मिल गया आपने डाल दिया. Just use the journals and articles and research paper which are published in the reputed journals, and use the database and university library. So this is all about academic writing. Okay. The next question which I will be dealing is how to start with academic writing. So just a minute, there is a spelling error here. Okay, fine. आपको एकेडमिक राइटिंग लिखने के लिए अगर पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बिफोर आई स्टार्टेड राइटिंग माय पीएचडी प्रपोजल और पीएचडी थीसिस, बाय दैट टाइम आई थिंक आई हैड ऑलरेडी रिटन 15-20 पेपर्स मेरे तब तक लिख के हो चुके थे उस टाइम पे, आज से 5-7 years बैक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद राइटिंग रिसर्च पेपर. नॉट नेसेसरली कि आप बहुत हाई फाई जर्नल के लिए आपको लिखना है. Start writing with the small level, because जो scholarly journals हैं, the criteria for writing scholarly journals and their peer review is quite very critical to pass. So as a fresher, start with the small writing with the research paper. Once you write research paper, जब आप 10, 12, 15 रिसर्च पेपर लिख लेते हो प्रॉपर स्ट्रक्चर में, प्रॉपर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, पब्लिश हो जाता है, देन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यस मुझे पता है. So it's very, very important that you start academic writing with the research paper. Don't jump directly to writing book. Don't jump directly to writing reference paper, reference books, or don't jump directly to writing thesis. Start writing. If you're a fresher, start writing with the research paper. This research paper will give you author's understanding of subject they are researched. Okay, what is research paper? एक particular topic होगा. अभी आपने देखा होगा हमारे nearby there are universities and colleges which keep on conducting the conferences, national and international conference होते हैं, और उनका एक particular theme होता है. Okay, so उस थीम के ऊपर आपको that particular theme जो आपको कॉन्फ्रेंस का होगा, उससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, व्हाट आर योर क्रिटिकल एनालिसिस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक. यू रिसर्च दैट एंड यू पुट दैट. दैट्स इट. आपको जरूरी नहीं है वहां पे सजेशन देने, रिकमेंडेशन देने. सजेशन रिकमेंडेशन देने के लिए आपका रिसर्च उतना इन डेप्थ होना चाहिए. बट रिसर्च पेपर इज अ वेरी स्मॉल वर्जन. 6-7-8 पेज का आपका रिसर्च पेपर होता है. उसमें आप हार्डली 15-20 दिन, महीने भर में रिसर्च पेपर कंप्लीट करते हो लिख के. उसमें आप सजेशन दोगे, रिकमेंडेशन दोगे, ऑन व्हाट बेसिस? 15 दिन की स्टडी के बेसिस पे आप सजेशन देते हो. So I have seen research paper where people are giving suggestions and recommendations, and they are giving suggestion and recommendation to government, to Maharashtra government, to Indian government, to international organization. Why? On the basis of 10 or 15 days research, you are giving suggestions. For giving suggestion, for giving recommendation, it's very important. You should have in-depth study. आप suggestion तभी दे सकते हो जब आप उसके अंदर घुस चुके हो, इतना आपने उसके अंदर in-depth study कर लिया, तब आप suggestion देने के position पे हो. So when you are writing research papers, not necessarily put suggestion, recommendations and all. Just उस title, उस topic के ऊपर आप research करो, put your viewpoints or your critical analysis on that topic. That's it. So start with that. Okay. Just see that you should have one thesis statement, or you can say research problems. एक research problem उस topic या उस area से ले लीजिए. उसी research problem में आप ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि आप solution मत दीजिए. Give solution, but give solution which is justifiable to your research paper of 10-15 days. And also give a supporting arguments and claim based on maybe on literature review or on your experiments and observation. So that's how you start with the research paper. See, freshers के लिए मेरा advice ये है कि if you start writing research paper, always take guidance from people those who are senior to you. आपके HODs हैं, seniors हैं, जो सालों से research paper लिख रहे हैं, उनका research paper एक बार आप ले लीजिए. या आपकी libraries में already published research papers होंगे, online इतने research papers, go through them, read them, and see what they have written, how they have written, and then start writing. I still remember my first research paper when I wrote, I was clueless how to go about it.
I went to my HOD, I went to my senior people, अरे मुझे बताओ ये थीम पे कैसे लिखना है, and after every paragraph or every page I used to run behind them, अच्छा ये पढ़ लो, ये बराबर है क्या, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए. Okay, and and after completion of my first research paper, I was on the top of wall, like अरे यार मैंने क्या लिखा है, क्या पेपर लिखा है मैंने. Believe me, after I think 15 years of service, आज भी मैं रिसर्च पेपर लिखती हूँ. आज मैं जब अपना रिसर्च पेपर देखती हूँ, पुराना वाला, पहले वाला, आई फील सो, ये मैंने लिखा है ऐसा. सो ऐसा होता है. सो ओवर द टाइम पीरियड आई गॉट एक्सपीरियंस, आई केम टू नो ओके ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए. नाउ आई एम I'll not say I'm master, but I'm more experienced compared to my first paper. So today when I see my first paper, for that time I was feeling that I was very excited, and उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लिखा है मैंने लिखा है, because it was first paper, no. तो आज मैं लिखती हूँ तो आज मुझे लिख के लगता है ये मेरा पेपर है, ऐसा लिखा मैंने, इतना गंदा. तो वो होता है. फर्स्ट पेपर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फर्स्ट पेपर शायद आपका अप टू द मार्क नहीं होगा, बट ओवर द टाइम पीरियड when you start writing, you will definitely get that experience. Okay, that's very important. Do not skip to write research proposals. Okay, Mumbai University ICSSR, as this research methodology workshop is sponsored by ICSSR. So ICSSR हो गया, Mumbai Universities हो गए, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो they keep on giving grants for the research proposal. Okay, so just apply, give your proposal. Now what is proposal? When you are, अच्छा proposal आपका PhD रिसर्च के लिए भी हो सकता है, प्रपोजल आपका माइनर रिसर्च के लिए भी हो सकता है, MRP के लिए भी माइनर रिसर्च प्रपोजल भी हो सकता है. दोनों भी प्रपोजल्स में थोड़ा डिफरेंस है. यू कैन राइट प्रपोजल फॉर PhD ऑल्सो एंड प्रपोजल फॉर द रिसर्च ग्रांट ऑल्सो. PhD में आपका प्रपोजल right time पे होगा when you are up to that level, when you clear your net set or when you clear your PET or like that. But अगर वो आपके हाथ में नहीं तो at least proposal for research grant आपके हाथ में है. So if you are getting delay in your PhD pursuing, go for the proposal of research grant. मुंबई यूनिवर्सिटी का हर साल MRP आता है, अप्लाई कीजिए आप उस पर. उन लोगों का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है प्रपोजल का. Go through that format, think about a topic. They are not limited, I mean they don't have that limited narrow topic selection. You can select any topic. Okay, select topic, उसके ऊपर थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा सा प्रपोजल का तैयारी कीजिए, and they have a fixed format of structure of submitting the research proposal. Go through that structure, fit your proposal into that structure and apply. बिलीव मी, अगर आपने एक या दो रिसर्च प्रपोजल आपके एक्सेप्ट हो गए और आपने एक या दो MRP कंप्लीट कर लिया, इट्स इक्विवेलेंट टू हाफ डन PhD. आपका PhD आधा हो चुका है, मतलब ये समझ लीजिए. इट विल बी स्मूथिंग, मतलब आप आधी चीजें. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपका जो MRP है वो PhD का ही छोटा वर्जन है. ओके, सिर्फ आप एक साल में करते हो, PhD आपको 2 या 3 साल लगते हैं, इतना ही है. सो स्टार्ट विद द रिसर्च. तो वंस यू आर आपका थोड़ा सा get experience with the research paper, the next I will suggest go for the research grants. And just prepare proposal according to the university or funding agency. Funding agency जो है उनका एक research proposal का एक format होता है. Don't put your format, otherwise वो reject हो जाएगा. Okay, so take their format, in what format they want and go accordingly. बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे जो मिला है बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार. इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग पेपर, जस्ट गो एंड अटेंड द कॉन्फ्रेंस. Just listen to the people, just listen to the academicians, research scholars coming there and sharing their viewpoints. लोगों को सुन के भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो. अगर आप एक कॉन्फ्रेंस में जाते हो, you sit there and you see 30 to 40 people in a day presenting their research paper, presenting their objectives, presenting their findings and all that. आप सोचिए आपको कितना वास्ट नॉलेज मिलेगा. So sitting in your cabin and within 4 wall of your college will not help you if you want to be an academic writer. Come out of your college, come out of your cabins, start attending the conferences. This, my personal experience, this one factor has given me lot of boost. Okay, so as a fresher, start attending this seminars and conferences. Read journal, research papers and journal in your area. अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या आप साइंस से हो या सोशल साइंस से हो, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, if you have certain topics in your mind, start reading scholarly journals,
स्कूपर्स के हो गए, आपके जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स हैं, ऑनलाइन दे आर अवेलेबल. स्टार्ट रीडिंग. सिट इन योर लाइब्रेरी एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन 1 घंटा आप रिसर्च के लिए निकालिए. Like in my college, we have a separate library. Mein, there is a separate area called research area. Okay, a research round table area है, जहाँ पे faculty members को we have given a time slot कि हफ्ते में एक दिन आपको यहाँ पे research पढ़ना है. Okay, 1 hour or 2 hour, and they maintain a record. Okay, because जब तक हमारे colleges में ऐसा होता है, जब तक आप compulsory नहीं करो, लोग काम नहीं करते. So it's for their benefit, but unless and until you implement some disciplinary system, people will not work. So if you are HOD or if you are principal of your college or you're in that position, you can go ahead with this. Tell your people, tell your teachers कि आप हफ्ते में एक दिन आप जो है इस रिसर्च कॉर्नर में बैठ के वहां पे एक कॉर्नर बना दीजिए जहाँ पे आपके रिसर्च जर्नल्स हों, अच्छे जर्नल्स, अच्छे मैगजीन, अच्छे आर्टिकल्स, एंड टेल देम टू go through them in a week, 1 hour or 2 hour. And even my teachers, they write, once they read a journal, and they maintain one diary where they write a literature review. कि आपने अगर कोई जर्नल पढ़ा, वो पढ़ने के बाद में उसका एक जो ब्रीफ समरी वो लिख लेते हैं. So they maintain one such kind of diary. This is one way where I'm trying to inculcate habit of reading journals among my faculty members. So it's not necessary कि आपके ऊपर कंपल्शन हो तभी आपको करना है, आप इंडिविजुअली भी ये कर सकते हो. हफ्ते में एक दिन आप निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा, go to your library. Journals अगर आपकी लाइब्रेरी में नहीं है, order for those journals, okay, related to your specific area. पढ़िए उसको, पढ़ने के बाद में उसको आप ना लिखिए. 1 paragraph sufficient. 1 घंटे में आपने एक पैराग्राफ लिखने में हार्डली 5-10 मिनट लगता है. ओके, 5-10 मिनट उसको लिखिए, एंड इवेंचुअली आप देखोगे धीरे धीरे यू विल बिकम एक्सपर्ट इन लिटरेचर रिव्यू. So that's very, very important. So these are few tips. This is how you can start with your academic writing. Now coming to the most awaited things, that's writing of thesis and dissertation. Okay, thesis लिखने की शुरुआत आपकी होगी. thesis लिखने का नंबर तब आएगा जब आप PhD में enroll होंगे. So I don't know how many of the participants right now are research scholars, but as a research scholar, you must be aware that enrolling for PhD is not an easier task. Okay, you need good proposal, you need good guide, you need good university. ये सब जर्नी खत्म होके फिर आपकी एक सेकेंड फेज ऑफ जर्नी शुरू होती है रजिस्ट्रेशन के बाद में, दैट इज कंडक्टिंग योर रिसर्च. वो 2-3 साल की जर्नी खत्म होने के बाद में आपकी तीसरी जर्नी शुरू होती है, राइटिंग ऑफ थीसिस. बिलीव मी, राइटिंग ऑफ थीसिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जॉब अगर उस टॉपिक पे आपने सच्चे मन से, सच्चे इंटरेस्ट के साथ में 2-3 साल काम किया है तो. एंड it will take time. अगर आप उसको अच्छे से लिख रहे हो, it will take time of minimum 6 months. So at the end of your research work, suppose you plan your research work. अगर आप 2 साल का रिसर्च वर्क कर रहे हो तो कोशिश करो 1.5 साल में अपना रिसर्च खत्म करो, बिकॉज लास्ट के 6 महीने, बिकॉज that happened with me. I was like, okay, research हो गया, अब थीसिस से तो लिखना है, सारा कुछ डेटा है, उसको एक जगह पे accumulate करना है. And when I set for writing, it took almost 5 to 6 months to write thesis. Genuinely I'm saying, and I didn't expect कि इतना लगेगा, because I was very much sure कि मेरे पास सब कुछ है. Everything was there, just I have to compile everything in a systematic structure, and it will hardly take 1 or 2 months. But when I get into the depth, लिखते गए, अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या छोड़े क्या रखे, इतना रिसर्च किया, it took almost 6 months. So the first step is, if 2-year research अगर आपका PhD है, 2 year में कोशिश करो 1.5 year में आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाए. लास्ट का 5-6 months टेक एम्पल टाइम, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनका सिनॉप्सिस सबमिट होने के बाद आपके पास 6 महीने का टाइम होता है. सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया, फिर थीसिस लिखने बैठे, उसके बाद में 6 महीना खत्म हो गया, उसमें आप थीसिस नहीं लिख पाए. देन यू गो फॉर एक्सटेंशन, देन यू रन फ्रॉम यूनिवर्सिटी दिस पिलर पोस्ट एंड ऑल दैट. 10 लोगों को फिर एक्सटेंशन के लिए आप ये करते हो, लेटर देते हो, फिर वो एक्सटेंशन होता है, एंड देन लॉट ऑफ मगजमारी एंड ऑल. डोंट गो फॉर दैट. प्लान योर थिंग्स इन beforehand, whether it is enrollment to PhD, whether it is doing your research, or whether you're writing your thesis. Plan. This is what I'm sharing basis on my experience.
though I have planned so many things, but in spite of that, जब आप actually करने जाओगे ground level पे, तो planning ऊपर नीचे होता है. Always keep a buffer time for your work. Okay. So coming to what is thesis? Thesis is the original research based on the previous research. So thesis, आपकी जो research है, it should be original. किसी ने already वो research किया, अब उसी को दोबारा उसी area में उसी target audience पे कर रहे हो, वो आपका research नहीं है. So it should be original but based on the previous research. Somebody already has done a work, और कुछ चीजें जो है उन्होंने नहीं किया जो आप उसको कर रहे हो continuation में. For example, somebody has done a research work on women. Okay, women work life balance, for example, किसी ने कर लिया. Women के ऊपर किसी ने किया, men के बारे में किसी ने नहीं सोचा. There are men, those who are singles, those who are single parent, those who are managing their household work and office. That is, though the market is very small, target audience, but there are men. So the person has not covered that part. You can cover that part. So that is so you just need to see the previous research, what has been done. What they have not done will be your research. उन्होंने जो किया वो आपका रिसर्च नहीं होगा, उन्होंने जो किया वही आप कर रहे हो, तो वो तो फिर डुप्लीकेट हो गया ना. What they left, किसी ने फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च 2001 में किया था. 2001 से लेकर 2021 पिछले 10 सालों में उस टॉपिक पे कोई रिसर्च नहीं हुआ है, बट जबकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए उस एरिया में. मे बी साइंस, मे बी टेक्नोलॉजी, कोई रिसर्च नहीं हुई. तो जिस बंदे ने लास्ट 2001 में रिसर्च की थी, उसके बाद से लेकर अभी तक 2010 तक देयर इज अ रिसर्च गैप जिसमें कोई रिसर्च नहीं हुई है, बहुत सारा चेंजेस हुआ है. दैट विल बी योर रिसर्च. So your research should be new, adding to the already happened research, and it should contribute something new on advancement to the research. That is your thesis and research. Okay. Another one, आप थीसिस लिखते हो दो टाइप के. वन इज एज अ पार्ट ऑफ पीएचडी और मास्टर प्रोग्राम, वहां पे थीसिस होता है. थोड़ा सा ही फर्क है थीसिस एंड डिसर्टेशन में. टेक्निकली लोग पीएचडी थीसिस को भी थीसिस ही बोलते हैं, और मास्टर्स डिग्री के थीसिस को भी थीसिस ही बोलते हैं, और डिसर्टेशन भी कई लोग बोलते हैं. बट थोड़ा सा माइन्यूट टेक्निकल गैप है उसमें. दोनों यूज होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि आपको यही यूज करना है. सो थीसिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द मास्टर प्रोग्राम एक्चुअली, and dissertation word is used for the doctoral program. But for the doctoral program also people write thesis because it's it's almost, so ये दोनों synonymous से use हो जाता है. Okay, now coming to the still people are joining. So now we are coming to structure of academic writing. I will be focusing on thesis writing. जब आप thesis लिखते हैं उसका structure क्या होना चाहिए, and in depth also I will discuss कि हर एक section के अंदर आपको क्या cover करना है. ठीक है. ये छोटा सा टेबल है जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए. इफ रिक्वायर्ड आई विल शेयर यू विद दिस. दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट. ऐसा नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, बट येस मोर और लेस 80 to 90% आपका थीसिस इस फॉर्मेट में होना चाहिए. योर एंटायर थीसिस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी पार्ट होगा एक, फिर उसके बाद शुरू होगा आपका मेन थीसिस, दैट इज बॉडी पार्ट, बॉडी ऑफ इंटायर रिपोर्ट और योर स्टडी, एंड लास्ट में आपका आएगा सप्लीमेंट्री मटेरियल. तो इनिशियली प्रिलिमिनरी मटेरियल तो आप अगर अपनी यूनिवर्सिटीज के ऑलरेडी जो थीसिस सेक्शन में जाओगे, ऑलरेडी जो थीसिस सबमिटेड है उनको देखो, यू विल गेट एन फेयर आइडिया कि क्या होना चाहिए. जनरली प्रिलिमिनरी पेज में आपका फर्स्ट पेज टाइटल पेज होता है. देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर दैट टाइटल पेज. Talk to your guide, go through your university and see their format. So there is a title page, there is a proper format. The first page will be title page. Then you will be having a table of content. In depth में इन सब के बारे में अभी बात करने वाली हूँ. Then abstract and synopsis आ जाएगा. After that body part में जैसे मैंने बोला, your entire body part should be divided again into 3 parts, starting with the introduction, ending with the conclusion. इस बीच में आपका इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, आपके फाइंडिंग्स होंगे, उसके ऊपर आप डिस्कशन अगर आप ऐड करोगे तो दैट्स गुड. आफ्टर दैट रिकमेंडेशन एंड
suggestion or conclusion. This are the main core parts. आप चाहिए तो इनको chapters में divide कर सकते हैं. So this entire things you can divide into chapter, like chapter 1 could be introduction, chapter 2 literature review, chapter 3 research methodology, and like that. And last में ये chapter नहीं है, references and bibliography आपका last में आएगा. You can also use some appendices into this. So this is how this entire thesis का पूरा format आपका होना चाहिए. Now I will be going bit by bit, एक एक जो भी जितने भी मैंने यहाँ पे अब ये पूरा कंटेंट डाला है, I'll be going one by one into it. Okay. Title of research paper कैसा होना चाहिए? What is title of research paper or research study? It's a title of your systematic investigation. आप क्या रिसर्च कर रहे हो, किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, उसका पूरा टाइटल. That's your title of your investigation. So you need to give one title to your investigation. बिना टाइटल के, बिना नाम का कोई रिसर्च नहीं होता, उसको आपको नाम देना. नाम ऐसा होना चाहिए जो कैची हो, इंटरेस्टिंग हो एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए. आई मीन व्हेन रीडर रीड दैट नेम ना, जब रीडर आपके टाइटल पढ़े तो उसको समझ में आ जाना चाहिए आपका रिसर्च क्या है, क्या कवर कर रहा है और क्या उसका स्कोप है, एंड व्हाट पर्पस यू आर डूइंग दैट. सो टाइटल शुड बी सच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कैसे होगा दैट आई विल टेल यू नाउ. It should indicate exactly what you are researching. Okay, आपका रिसर्च एरिया जो क्या है वो उसका स्कोप आपको वहां पे स्पेसिफाई करना है. Exactly what you are researching. It should not be vague and too lengthy. And you need to condense your entire scope and objective. आपके रिसर्च का पर्पस क्या है और आपका रिसर्च में क्या टारगेट ऑडियंस है, कौन सा एरिया है, वो सारी चीजें एक टाइटल के अंदर आपको लाना है. कैन यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट टू. वेरी डिफिकल्ट पार्ट इज टू framing right title for your study, because title बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर आपका रिसर्च भी समझ में आए, उसका स्कोप भी समझे, उसका पर्पस भी समझे, उसका टारगेट ऑडियंस भी समझे. इस तरीके से आपको, सो कंडेंसिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू वन लाइन, वन सेंटेंस इज द डिफिकल्ट टास्क, बट यस यू कैन डू दैट इफ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर रिसर्च टॉपिक. It should be catchy and interesting also. Okay, that's very important, because reader जब पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद में सबसे पहला ध्यान जो भी आपके रेफरीज हैं या जो रिसर्च गाइड्स हैं, पहला लोग यही पूछते हैं. आप किसी को बोलो आई एम डूइंग अ रिसर्च पेपर और आई एम राइटिंग अ रिसर्च पेपर, आई एम डूइंग पीएचडी, आई एम अ पीएचडी स्कॉलर, पहला लोग यही बोलेंगे आपका रिसर्च टाइटल क्या है. So first question people will ask. And I have seen many scholars, they are not able to put their title. वो इतना बड़ा टाइटल होता है कि वो बोलते हैं रुको 2 मिनट में अपना थीसिस जरा ओपन कर लूं या अपना सिनॉप्सिस एक बार देखूं. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल माय टाइटल. सो अगर आपका टाइटल आप भी नहीं बोल पा रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट रीडर और योर रेफरी टू बी इंटरेस्टेड इन योर टाइटल? So it's very important, title, it should be, as a research scholar, it should be on tip of your tongue. And it should be such कि आपको भी वो बोलने में आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, आपका रीडर उसको पढ़ नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा 3, 4, 5 लाइन का आपने टाइटल बना दिया. आई हैव सीन PhD thesis where the title is too lengthy because they try to cover everything. वो सोचते हैं कि टाइटल में मैं सब कुछ कवर कर लूं, और टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो तो टाइटल जितना बड़ा अच्छा होगा उतना मतलब मेरा इंप्रेशन बनेगा, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है. समटाइम बहुत बड़ा टाइटल ना पीपल गेट बोर, वो आपका टाइटल पढ़ने से ही बोरिंग शुरू हो जाती है उनकी. डोंट डू दैट. नो, कीप योर टाइटल स्वीट, सिंपल, but yes, not compromise with your scope and objective and purpose of your research. Now how to formulate a suitable title. इसके लिए कुछ पैरामीटर्स मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर निकाले हैं. that if you keep these factors in your mind, just keep a check. ये देख लो कि ये चीजें आपके टाइटल में more or less, I'm not saying 100%, इतना चीजें अगर आपके टाइटल को कवर करती हैं तो your title is good. Okay, purpose of your research, why you're doing this research, scope of your research should be covered properly, and narrative tone of the paper. Okay, what is narrative tone? I'll tell you. For example, a critical analysis of so and so. So it's a narrative tone that you आप बोल रहे हो कि आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो critically, और a case study of so and so. So आप यहाँ पे पहले ही बता रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर फील्ड पे या पर्टिकुलर चीज पे केस स्टडी कर रहे हो.
a descriptive study on so analytical study, आपने ऐसे टाइटल्स देखे होंगे. So वो जो आप analytical कर रहे हो या descriptive कर रहे हो या experiment कर रहे हो, an experiment on so and so thing, you know. So when I start my title with something like this, an experiment, a case study, a study, or you know, or critical analysis, something like that, तो आप वहाँ पे अपना narrative tone दे रहे हो. Basically आप क्या कर रहे हो? Cover your scope in terms of your audience, in terms of your area, geographical area. You can also use method which you have used to in your, वो भी आपके टाइटल में आप चाहिए तो डाल सकते हो, जैसे कि you know descriptive method, experimental method अगर आपने यूज किया है वो आप लिख सकते हो वहाँ पे. Okay, now I have some titles for you which I can see. I'll just, now we were talking about titles, कुछ titles मैं आपको बताती हूँ, जैसे we will discuss कि कैसे इन्होंने सारी चीजें cover की है. ठीक है, just a minute. I'm not able to open it properly. Wait. ठीक है, जैसे अगर आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देखोगे साइड में, there's a title which called a study of customer perception and awareness about e-banking in Kolhapur district. मैम उसको So फुल see, स्क्रीन करो ना. I'm trying. I don't know. ये this upper part is coming. Wait. Just a minute. हाँ, ये जैसी मैं यहाँ पे जा रही हूँ ना, ये यहाँ पे ले रहा है. मैक्सिमाइज का हाँ, वो मैक्सिमाइज नहीं दिख रहा है मुझे. That's a problem. Wait. I'll stop sharing and then I'll go for this. हमको दिख रहा था मैडम. हाँ, अभी हो गया. Yes, it's done now. Wait, now I'll start sharing. Okay, now it's visible. I'll focus on title. कुछ title मैंने निकाल के रखे हैं. perfect. थोड़ा सा blur है, but I think we can. Yeah. So जैसे ये देखिए, ये टाइटल है, a study of customer perception and awareness about e-banking in सोलापुर district. इससे सब कुछ कवर कर लिया. आपका टारगेट, आप क्या स्टडी कर रहे हो, what is your topic and what is your purpose? Your purpose of study is you want to study the perception and awareness of customer. मैं कस्टमर का अवेयरनेस जानना चाहती हूँ और उनका परसेप्शन जानना चाहती हूँ. टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स ई बैंकिंग. यानी कि मेरा एरिया भी, मैंने टॉपिक का जो स्कोप है वो भी कवर कर लिया है कि मैं बैंकिंग है, लेकिन बैंकिंग में मैं सब नहीं कवर करूँ, मैं सिर्फ ई बैंकिंग वाला एरिया पे ही फोकस करूंगी. तो मेरा टॉपिक का स्कोप कवर हो गया. मेरा टारगेट ऑडियंस, मुझे पता चल गया टारगेट ऑडियंस कौन है, जो बैंक में ई बैंकिंग सर्विस लेने वाले कस्टमर्स हैं. What is my purpose? I want to study the perception and awareness. And मैंने geographical scope भी डाल दिया है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट को ही मैं कवर कर रही हूँ सिर्फ. So if you see this title, it has covered the purpose, it has covered the target audience, it has covered the topic का scope, आपका ई बैंकिंग है, and geographical scope also. कई लोग यहाँ पे टाइम स्कोप भी डालते हैं. टाइमिंग स्कोप मतलब अगर आपने कोई ऐसी स्टडी कर रहे हो जो 2000 में हुआ और 2000 के बाद में पिछले 15 साल से कोई स्टडी नहीं हुआ. So you can put here also, you know, on study on so and so topic from 2010 to 2001 to 2020. That's, तो कई लोग यहाँ पे टाइम का स्कोप भी डालते हैं अपने टाइटल में. The another title which I have for you here, see, lifestyle diseases in Kerala. तो स्कोप बहुत क्लियर है. आपका पर्पस ऑफ योर रिसर्च इज, आप किसको स्टडी करना चाहते हो, लाइफस्टाइल डिजीज को. किस एरिया में? ज्योग्राफिकल स्कोप दे दिया है केरला में. अच्छा, ये नरेटिव दिया है देखो. अच्छा, उसमें भी आप, यू आर वेरी स्पेसिफिक. केरला बहुत बड़ा है, इतना बड़ा आप नहीं पढ़ पाओगे ना, इतना बड़ा स्टडी नहीं कर सकते हो. सो यू विल बी कवरिंग एनालिसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कंजम्पशन पैटर्न एंड एडोलेसेंस ओबेसिटी इन कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट. यानी कि आप लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हो. दिस इज अ वाइडर स्कोप इन केरला. वाइडर स्कोप को मैंने फिर नैरो डाउन किया है, दैट आई विल बी कवरिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आई विल बी कवरिंग कंजम्पशन पैटर्न, and I will be covering the adolescent obesity. So I will be focusing on status, consumption pattern and obesity.
and that too Kerala, since the geographical area is so wide, I cannot cover entire Kerala, so मैंने एक डिस्ट्रिक्ट लिया है, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट. तो ये टाइटल से आपको समझ में आ जाता है सामने वाला क्या चीज को कवर कर रहा है. Okay, another one if I have here, socio-economic impact of deforestation in the tribals in Kerala. अब केस स्टडी ये देखो, ये केस स्टडी लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड नरेटिव, केस स्टडी ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट. सो आपका पर्पस ऑफ स्टडी इज यू वांट टू स्टडी अबाउट डिफॉरेस्टेशन, you want to study about impact of deforestation, you want to study about the socio-economic impact. डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ना चाहते हो, उसके इम्पैक्ट के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो. तो इम्पैक्ट में भी बहुत इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन के, नेचर के ऊपर है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है, हर चीज पे इम्पैक्ट है, बट आप सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक एरिया कवर कर रहे हो. अच्छा, ज्योग्राफिकल एरिया में मैं सिर्फ केरला कवर कर रही हूँ. केरला में भी ट्राइबल एरिया में भी आई विल बी कवरिंग ओनली वन ट्राइबल, बिकॉज ट्राइबल्स तो बहुत हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर केरला. आई एम वेरी स्पेसिफिक कि मैं एक ही चीज पे स्टडी कर रही हूँ, दैट इज अ केस स्टडी ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट. सो आई विल बी कवरिंग अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट अंडर केरला. सो ये आप जनरलाइज से लेकर नैरो डाउन आपका टाइटल करते जाओगे. जितना आपका टाइटल नैरो डाउन होगा उतना आपका लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च करने में आपको इजी पड़ेगा. बहुत वाइड एरिया आपने ले लिया, आपका रिसर्च कभी खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज यू इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कवर एवरीथिंग, नो, राइट. अनदर वन एज या सी, ये भी एक है, द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल इन केरला. ये भी सेम है. माय पर्पस, आई वांट टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नॉट ऑल पीपल इन केरला, मैं सारे लोगों को कवर नहीं कर रही हूँ, सारी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर रही हूँ. आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द ट्राइबल्स इन केरला. अच्छा, केरला में भी विद स्पेशल रेफरेंस टू वायनाड डिस्ट्रिक्ट. केरला बहुत बड़ा है, मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट को chosen. So I am giving my geographical scope, I am giving my study scope, I am giving my population scope, target audience scope. I hope it's clear. Yes. Yes, participants, I think मैं पिछले 1-1.25 घंटे से बोल रही हूँ, so I just want to know whether you all are there with me or not, or are you able to understand what I'm saying? Hello. Hello. Clear. Yeah, it's clear now. Okay, so this is so yeah. So this is how title should be selected. Okay, it should be interesting. And just a minute, where I was. Okay, this is a parameter. Now coming to, I will be sharing few tips to select your title. Explain आपका टाइटल, जैसे मैंने अभी बोला, शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर रेफरी, क्योंकि पहला क्वेश्चन जब आप रिसर्च पेपर या अपना थीसिस सबमिट करते हो, रेफरी और गाइड का पहला क्वेश्चन, या फिर आप जब इंटरव्यू देते हो अपने प्रपोजल के साथ में, पहला क्वेश्चन ये टाइटल आपने क्यों चूज किया, पहला क्वेश्चन वही होता है. तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू जस्टिफाई योर टाइटल, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर टाइटल. इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग हो, कैची हो, सब्जेक्ट एरिया में आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because if you are interested, then only you will be able to develop a good or right title. वरना आप कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी टाइटल बन जाएगा. Okay. Coming to the next, choose a topic that isn't too resource intensive. Don't use ऐसा बड़ा topic जिसमें you need lot of money, lot of energy, lot of resources. You know, you are not able to cover. As I said, Kerala. तो अगर आप केरला बोलते हो तो Kerala is too vast. तो अगर मैंने पूरा केरला एरिया ले लिया तो it's not possible for me to cover survey in entire Kerala area. So I need to narrow down. So in terms of money, your energy, resources, okay, वो आपको ध्यान में रखना है when you're selecting your title. You know. Determine time frames. As I said, title में you can write down the time frame also within your scope, and determine before finalizing your title, that within what time period you are going to complete your research, and किस time से किस time का research आप करने वाले हो. जैसे अगर already last research इस पे year 1980 में हुए, तो 1980 से लेकर 2021 तक इस एरिया में, उस एरिया में कोई रिसर्च नहीं हो रही. So I will be doing research from 80 onwards till 21. Yeah, I will be doing research for last 5 years. I will be doing research for last 1 decade. So determine that time frame. Otherwise आप करने जाओगे तो फिर वो 1950 से लेकर अभी तक आप 50 साल की रिसर्च एक थीसिस में नहीं डाल सकते हो. So you need to be specific with your time frame, that within what time frame you are conducting your research.
read everything what you can do. आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ लो, because more you will go through the your topic, more you will get information and more you will be able to convert that information into the knowledge. Add something, yes, ensure and just ensure that what you are researching, your study should add new to already existing research. Already लोगों ने किया है, आप उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हो नए पैकेट में पुराना सामान डालकर, वो नहीं चलेगा. It should be new, innovative, adding to the research. Before finalizing your title, because when I finalized my title, I showed it to 10 people. फिर वो reframe, because I prepared some timetable, उसके I prepared some title, उसके बाद में guide के पास गया, उसके बाद experts लोगों से लिया, reframe होते होते after 5-7 feedback and advices from the expert people, my title was finally framed. So as a fresher, I will give you same advice, because though we claim कि हमारे पास बहुत knowledge है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हमें तो अब सब आता है, ऐसा नहीं होता है. Always take suggestion, feedback, constructive suggestion people, those who are your seniors, those who have already gone through this process, those who are research guides. Take their feedback, take their advice, and then fine tune your research title. Because एक बार टाइटल रजिस्टर हो गया, उसके बाद में कई लोगों को मैंने देखा है, they keep on running to university to change their title, क्योंकि उस टाइटल पे अब उनको लिटरेचर रिव्यू नहीं मिल रहा है, या उस टाइटल वो टाइटल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, now they are not able to conduct study under that title, and then they go to university, follow 10 फॉर्मेलिटी की, भाई अब मेरा टाइटल रजिस्टर हो गया, अब मुझे ये बदलना है, उसके लिए और 10 साल लगते हैं वहां पे. So it's very difficult when your title is registered. So पहले ही आप काम कर लीजिए, fine tune your title, keeping in mind all these factors. Table of content, yes, table of content, it's a bird eye view of your thesis. If you go through already established thesis in the university, you see that table of title होता है, जहाँ पे आपके research के अंदर, thesis के अंदर, whatever you have written, that should be presented in a systematic and a listed manner. It should have all headings, subheading, paragraphs, or graphs and tables, जो भी आपने अपनी research के. So when your referee or your guide, they go through your thesis, सबसे पहला वो शुरू के 4-5 पेज ही देखते हैं. शुरू के 4-5 पेज में they will see your table of content, कि अंदर क्या कवर किया हुआ. टेबल ऑफ कंटेंट जितना समराइज एंड जितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सिस्टमैटिक होगा, इट विल गिव बेटर इंप्रेशन अबाउट योर वर्क टू योर रेफरी. So just be sure that your table of content is properly. कई लोग देख लो सिर्फ इतना ही लिखते हैं, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 लिटरेचर, बस उतना 4 चैप्टर लिख के आपका टेबल ऑफ कंटेंट खत्म हो जाता है. ना उससे क्या हो रहा है, आप दूसरे का काम बढ़ा रहे हो. ओके, सामने वाले को फिर अंदर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आपने क्या कवर किया. बेटर गिव इट इन द फ्रंट पेज. नो, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट. फ्रंट पेज में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या कवर किया, उसका थोड़ा सब हेडिंग दे दो. चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू, उसमें आपने क्या क्या किया. इफ यू रिक्वायर, एट द एंड आई विल शो यू दैट हाउ द टेबल ऑफ कंटेंट वुड बी. आई जस्ट हाउ मच टाइम आई हैव, लेट मी. ओके, ठीक है, just a minute, we have time. I just want to go table of content. If I get my, I can show you. Wait. Initial pages यहाँ पे होना चाहिए. If there or not, let me check. See. No, it's gone, I guess. Okay, I'll just find out, and if I'll get, I will definitely share with you, because I think this has been shifted to somewhere else. Yeah, table of content, if I can get here. Yeah. Like, see, if you can see, there is 2 ways. Few people, you can write here introduction. These chapters आपने लिखे हुए हैं. अब chapter के अंदर what I have done, instead of putting here, I have put it on single chapter. Okay, for example, if you write like this. No, it's not here. Just a minute.
Okay. Once I get it, I'll show you table of content. Let me give some time to, I don't want to waste time on this. Table of content, I will show you at the end. Okay, no problem. So I'll go to my academic writing PPT directly now. Okay, so give your page number. आपके जो भी titles हैं, page आप या तो chapter के नाम शुरू में लिख दो और हर एक chapter के ऊपर you can give the entire details about that chapter. और other way out is आप table of content बनाओ और उसी के अंदर सारा जो thesis का जो है सब sections और sections you can put all together so that people those who are seeing your first page or first 1 or 2 page will able to judge what exactly their insights, you know. So table of content should be very clear. Give page numbers. Just ensure once you are done at the end, give a proper page number to your table, your chapters, headings, and ensure कि वो page number match होने चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि I want to see a particular graph, उस पे page number लिखा है. When I go to that page, वो graph उधर है ही नहीं. So before submitting your thesis, just see that your page numbers and all those matters should match. You know, it should not. And this is optional, but optional in the sense what I'm saying is जब आप thesis लिखते हो तो yes टेबल ऑफ कंटेंट आना चाहिए बिकॉज थीसिस ऑफ 300 400 पेज का 100 150 पेज का तो यस डेफिनेटली रिक्वायर बट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर यू डोंट राइट don't need to put a table of content because already your research paper is 6-7 पेज उसमें आप कहाँ table of content डालोगे 6-7 पेज people can go and see immediately inside okay so research paper या synopsis में आपका table of content नहीं भी रहेगा चलेगा but yes thesis में table of content need to be done so this is optional depending on what you're presenting. Coming to the next part, abstract, and some people say it as an executive summary. Some people in the PhD, when one before submitting your thesis, आप एक synopsis submit करते हो university को, which is a summary of your entire findings and research. So ये तीनों एक ही चीज है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें. फर्क ये है कि जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो जनरली यू राइट एब्स्ट्रैक्ट. when you write a dissertation or when you write a PhD thesis और उसके लिए आप जब शुरू में डालते हो तो it could be abstract but generally people write executive summary and synopsis is something synopsis जाएगा आपका maybe 15-20 पेज का एक synopsis. आप जब PhD complete कर लेते हो तो at the end of your completion you submit one synopsis to your university. Tell them ki yes I have done my PhD and this is my summary. Now that synopsis will go to your referee, they'll go through your synopsis and synopsis or abstract or executive summary जो भी है ये एक summary होता है आपके पूरे रिसर्च का. रीडर को पता चलता है कि भाई आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, आपने क्या कवर किया, क्या फाइंडिंग है. So it will give you reader an entire idea without going through entire thesis or without going through your research paper. So summary of the main content of your thesis is called as a executive summary or abstract or synopsis. It will give your reader a well-defined idea of what the thesis is all about. So जो हमारे referees होते हैं जब आपका तो universities क्या करती हैं once your PhD is finished वो आपका पूरा का पूरा thesis उठा के बाहर नहीं जाता है पहले आपका synopsis जाएगा. So they ask you to give your synopsis. So आपके पूरे thesis का you submit one small synopsis of 15-20 pages जिसमें आपका पूरा thesis will be in a nutshell. सब कुछ आएगा उसमें आपका इंट्रोडक्शन से लेकर रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या आया क्या फाइंडिंग्स व्हाट रिकमेंड एवरीथिंग विल कम बट इन छोटा करके. सो आपका 200 250 300 पेज का जो आपका थीसिस है दैट विल बी समराइज्ड इनटू 15-20 पेजेस. दैट सिनॉप्सिस विल गो टू रेफरी. दे विल गो थ्रू योर सिनॉप्सिस एंड दे विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव रिसर्च. इफ दे आर हैप्पी विद दैट, इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, इफ दे फील दैट ओके अब ये थीसिस काम का है हमको इसका वाइवा लेने चाहिए, then they accept your synopsis, then they call for your thesis. Okay, so this is how things will go. So is basically the purpose of writing abstract is giving a summary of your entire research paper or thesis to your reader. Just present key points at one place. Do not put too many things. मतलब आप कोशिश करोगे कि 300 पेज का आप एक पैराग्राफ में लिखो या 7-8 पेज का एक पैराग्राफ में लिखो, नहीं. Abstract generally one paragraph होता है. Executive summary 1 or 2 paragraph or 1 page. Synopsis as I said 15-20 page like that. So try to put key points और key unnecessary information मत डालिए. ऐसी चीजें डालिए जो रीडर को पढ़ने में अच्छा लगे और उसको आपके रिसर्च पेपर में इंटरेस्ट आ जाए. How to write abstract? I will give you some tips. Follow the order of your full report. आपकी जो पूरी रिपोर्ट है पूरी स्टडी है उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे भी चीजें डालेंगे.
introduction, findings, the research methodology, purpose, findings, and like that. Abstract should contain basically आपका background आना चाहिए, आपका purpose और objectives आना चाहिए, what methodology you have covered, what findings and results you got, and then conclusion. So इसी format में आपका research होगा, इसी format में छोटा summary करके आपका abstract बनेगा, and that too within a one paragraph. Believe me, it's an art. Keep 5W and 1H format. मतलब when you are writing abstract, अपने आप से question पूछिए. आपके research में आप what, where, why, when, who, and how. What you are researching, where you are doing that research, why you are doing this research, when you are doing that research, मतलब which time to which time period आपने लिया है. Okay, who is your target audience and how you have done your research means what research. तो ये 5W और 1H के क्वेश्चन पहले एक जगह नोट कर लीजिए, इनके आंसर लिख लीजिए. ठीक है, एक एक लाइन में इनके आंसर लिखे, हो गया आपका वही रिसर्च बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट. So ask this question to yourself. What is your research? Where are you researching? Why are you researching? What is your purpose? When are you researching? It means which time frame you are using. Who is your target audience? And how you're using, how you're conducting that research, what research methodology is. You answer this question, your abstract is ready. Provide an overview or preview to your audience. Avoid any unnecessary information जो पेपर में नहीं है, यहाँ वहाँ की बातें उसमें मत लिखिए आप. ओके, इधर उधर की बातें मत कीजिए, मुद्दे की बात वहां पे आपको पेपर में लिखना है, क्योंकि आपका एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी वही पढ़ता है जिसको पूरा नहीं पढ़ना है. सिंपल लॉजिक है. जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, अब 200 पेज का एक बुक है जिसकी लिटरेचर रिव्यू आपको करना है. हु इज हैविंग टाइम टू गो थ्रू ऑल 200 and 300 पेजेस? आई डोंट हैव टाइम. सो हम क्या करते हैं, हम जब लाइब्रेरी में जाते थे तो यूज्ड टू गो टेक द थीसिस, शुरू का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, लास्ट का फाइंडिंग एंड कंक्लूजन पढ़ो, आपको पूरा पता चल जाएगा. So this is the purpose. Madam. Okay. Yeah. Seema Yeah. ma'am, Yeah. can I ask you a question here? Yeah, sure. Why not? Ma'am, generally when we go for conferences, they ask for the submission of abstract way before. Right. You have mentioned here that the findings and conclusion. Yeah, right. Okay, they are expected findings or the actual findings? See, what I suggest is abstract or executive summary you should write at the end once your paper is done or once your thesis is done, because जब तक आपको पता ही नहीं कि आपने किया क्या है, what are your findings or what are your methodology, you are not able to write abstract. Abstract और summary हमेशा आपके रिसर्च के लास्ट में लिखा जाता है. ओके, बट जनरली हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पहला भेज देते हैं, फिर उसके बाद में रिसर्च करते हैं, which is absolutely a wrong pattern. Because once, unless and until you have done a research, how can you write what you have done? Right? So अभी क्या हो गया है पता है? Initially, I have seen many conferences now they stopped asking for the abstract. I don't know whether you have gone through it or not. I have seen many. Now few I have observed now they are not asking. They are not asking for abstract because ये बहुत बड़ा question है. Some of them ask, but then okay. Because very simple logic, abstract is what you have done. आपका पूरा research या research paper का summary है वो. अभी आपने research ही खत्म नहीं किया तो आप summary कैसे लिखोगे? Summary you will write at the end once you have clear idea. Exactly. That's what the yes. So it is very wrong trend which was happening, which we have also followed. हम abstract लिख के भेज देते थे, हो जाएगा except बाद में research करेंगे. Okay, but ऐसा नहीं होता है, because I realized it after doing my PhD and after doing all this, going through many theses, कि yes, abstract is exactly what you have done. जो आपने किया ही नहीं उसको आप पहले कैसे, हाँ, फिर भी अगर कहीं पे compulsion है, you are not able to write findings and methods, but आप expected method तो लिख सकते हो कि भाई हम ये method से अपना research करने वाले हैं, this is my background, this is my objective. Findings आप नहीं लिख पाओगे वहां पे. तो अगर कहीं कंपलसरी है, हाँ, फाइंडिंग्स नहीं आएगा ना आपके पास. फाइंडिंग तो तब आएगा जब आप exactly, because then it's not possible. yeah. No, not possible, तो don't write it. बेटर एक पैराग्राफ लिखो जिसमें आप बैकग्राउंड लिख दो, आपका ऑब्जेक्टिव लिखो दो, और दिस मेथड आई एम गोइंग टू यूज. That's it. Findings you can throw. Yeah, that is one thing. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Thanks a lot. ठीक है, सो डू नॉट, और एब्स्ट्रैक्ट में आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन मत डालिए. एक पैराग्राफ में आपको नटशेल में लिखना है. अवॉइड रेफरेंसेस, लिटरेचर रिव्यू, so and so person has said so and so thing, and so and so person got so and so finding on so and so date. Don't write literature review here. There is no space for literature review in abstract. Avoid abbreviations, jargons, which is very confusing to reader.
अवॉइड इमेजेस, इलस्ट्रेशन, फिगर, टेबल, वो सब आप अपना रिसर्च पेपर और थीसिस के लिए रखिए। यहाँ पे आपको सिर्फ 1 या 1.5 पैराग्राफ में कितना बेस्ट आप अपना रिसर्च पेपर को प्रेजेंट कर सकते हो विद इन 1 पैराग्राफ, दैट्स ऑल। एंड अवॉइड लेंथी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। Okay, see, this is the last point the participant who was asking right now. Write abstract after you have completed the report. आपका काम खत्म होने के बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखो, वो ज्यादा वैलिड होगा रेदर देन आप पहले ही सब कुछ लिख दो, फिर वो मैच नहीं होगा, राइट? So I have one small ये for showing you abstract एक है ना मेरे पास, अच्छा मुझे कल मिला था तो I just kept it for today's session. Just let me see academic writing में। ये देखिए एक एब्स्ट्रैक्ट मुझे मिला है, एक पैराग्राफ है, ये सी, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ जॉर्जिंग 2005। ये जो पहला पार्ट है, रेड पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज अबाउट बैकग्राउंड। ओके, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव राइटिंग, थोड़ा बताया है कि मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या है, राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द प्रोसेस, एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नीड टू बी स्किल्ड इनटू दिस एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर ब्राइट करियर। थोड़ा सा उसने बताया कि ये टॉपिक जो है राइटिंग स्किल के बारे में। नाउ द सेकंड, उसके बाद उन्होंने शुरू किया व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडी। So it is also significant lecturer to know who are your students, how they think and understand. And here, yeah. So how they think, and this study examined, you can see the statement. This study examined first year undergraduate Australian and international engineering students as a writer of academic text. So आपने यहाँ पे बता दिया कि आपका टॉपिक क्या है, आपका पर्पस है, आप राइटिंग स्किल स्टडी कर रहे हो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट का ऑस्ट्रेलिया में एंड अंडर सो एंड सो यूनिवर्सिटी, दिस इज योर पर्पस। थर्ड लाइन में उन्होंने एक लाइन डाला है, what method you are using. The questionnaire interview were used to collect the data. करेक्ट? सो ये एक पैराग्राफ आपका हो गया, एक लाइन हो गया मेथड के बारे में। आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च व्हाट वाज योर फाइंडिंग, वो उन्होंने एक पैराग्राफ में डाल दिया। द प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च शोज दैट, सी रिजल्ट, preliminary result show that students from different culture initially have different concepts. After that they were genuine and handled writing with the different learning writing styles, but those with the more developed meta language are more confident. तो ये आपके findings आए। उसके बाद में आप कंक्लूजन करोगे। द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटायर रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। द कंक्लूजन इज स्टूडेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन फॉर एकेडमिक राइटिंग पॉजिटिवली correlates with their opinion about themselves as a writer. That's it. So you can see this beautifully. आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं। Okay, beautifully चार लाइन में background, purpose, method, result and conclusion has been covered. I hope you understand this now. Is it clear? Okay, so abstract is done. Introduction, yeah, I think the first chapter generally लोग introduction लिखते हैं। Introduction में do not put too many things just related to your specific field. Summarize current understanding about your topic. आपके topic के ऊपर आज के date तक somebody is switch on their mic. Please switch off your mic. Hello. Who's this? मेरा भाई निकल गया। Actually, I'm not able to identify the people. Those are mic. Hello. Ma'am, I'll try to find this out. Yeah. Okay, so summarize your current understanding, background. आपके टॉपिक से ही रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन डालना है। प्रोवाइड जनरल से लेकर आप पर्टिकुलर रिसर्च एरिया पे आइए। फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयबिलिटी सिचुएशन, अनएम्प्लॉयबिलिटी को आप वाइडर एरिया से नैरो एरिया में लेके आ जाओ। लाइक यू कैन कवर अनएम्प्लॉयबिलिटी इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से क्या है, इंडिया में अनएम्प्लॉयबिलिटी क्या है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, देन कम डाउन टू योर स्टेट, देन कम आउट टू योर डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से यू कैन नैरो डाउन योर इंटायर बैकग्राउंड from the wider area to narrow area. So this is how you write introduction part. Just ensure that tips for writing introduction: briefly describe the context and background of the research. Be specific about your objectives. You can mention, कई लोग objectives वगैरह के लिए separate chapter भी बनाते हैं, but कई लोग introduction में ही दिखा देते हैं what are your objectives, what are your purpose.
what is significance of your investigation once you did you complete this study, how it is going to affect important for the society, for at a micro level and macro level or individual level, that you need to understand and put here. Rational of a study is very important, because जब भी आपके thesis submit होते हैं तो आपको पूछा जाता है कई बार, because my referee asked me why you chose Mumbai, why you chose only this audience, why you chose only this area, why you chose only this topic. So whatever you are putting, you should have a justification for this. आपने यही district क्यों लिया, आपने यही target audience क्यों लिया, आपने क्यों tribal के ऊपर research किया, आपने इसी area यही time frame क्यों लिया. So they'll ask you, and you should be able to justify each and everything. So a rational will come here. Highlights your potential outcome. Findings आपके क्या होंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा once you complete your research. But yes, what are your hypotheses? What you're assuming? What will be your potential outcome? Put it here in terms of hypothesis. Outline your scope of study. As I said, title में भी आपका scope आना चाहिए. आपके इंट्रोडक्शन में भी जोग्राफिकल स्कोप, आपका टॉपिक स्कोप क्या है, आपका ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, इंटायर स्कोप ऑफ योर स्टडी शुड बी नैरो डाउन एंड कवर्ड हियर. यू कैन पुट द लिमिटेशंस आल्सो, एंड एट द एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर में जनरली आप चैप्टर स्कीम भी डालते हो कि आपके आने वाला पूरा जो थीसिस या प्रपोजल है क्या क्या कवर कर रहा है. तो ब्रीफ समरी ऑफ योर इंटायर रिपोर्ट और स्टडी स्ट्रक्चर, दैट्स द इंट्रोडक्शन चैप्टर. Coming here to literature review. Now, what is literature review? I hope since we are from the research background, all participants, you must be aware about writing the survey of existing knowledge. So already आपके टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च हो चुका है, you need to study, understand all those research, what different research work has been done into that particular topic or area. You can go through anything, books, articles, publications, newspaper, whatever, जो भी आपको मिले, secondary data, primary data, जो भी मिले, unpublished data, published data, go through it and try to find out the research gap, what they have done, what they have not done is your research gap. Okay, तो उन्होंने जो चीजें कवर नहीं किया या उस रिसर्च में जो लिमिटेशंस थे, जो कंट्रोवर्सीज थी, दैट विल बिकम योर रिसर्च गैप, एंड that is how the literature review should take first. Why it is important? Because it will help you to identify what development has been done. क्योंकि जब तक आप दूसरों ने उस पे क्या काम किया वो पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पे कितना काम हुआ है. तो कितनी डेवलपमेंट्स हुई है उस फील्ड में, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, तो आपके टॉपिक के ऊपर कितने लोगों ने अभी तक काम किया है और क्या काम किया है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यू कैन लर्न अबाउट द सोर्सेस एंड द रिसर्च मेथोडोलॉजी. सी ऑलरेडी इफ यू गेट, मेरे गाइड हमेशा मुझे बोलते थे ऐसा टॉपिक लो जिसके ऊपर ऑलरेडी थीसिस लिखे हुए हैं. तो मैं उनको बोलती, अरे मैडम आप अगर ऐसा टॉपिक लेंगे जिसपे थीसिस लिखा है तो फिर हमारा क्या होगा. बोला नहीं, उसी में से आपको ढूंढना है रिसर्च गैप एंड फिर आपको अपना टॉपिक फाइनल करना है. So she always is to insist, select such topics जिसके ऊपर ऑलरेडी लोगों ने काम किया, because more you learn, you will come to know what are उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया, उनको कहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आए, उनके क्या प्रॉब्लम्स थे, so that during your research you will avoid those obstacles and problems. So it will help you to find that research gap. Identify errors in your literature review. After reviewing, you'll identify that what errors has been done, and you can avoid those errors during your thesis or your research. Highlight strengths and weaknesses and controversies of that particular literature, and you can also identify subject expert. जब आप बहुत ज्यादा literature review करते हो तो आपको पता चलता है इस फील्ड में ये एक एक्सपर्ट है. जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे साइंस और टेक्नोलॉजी के एक पर्टिकुलर ऑथर है जिन्होंने उनके ऊपर बहुत लिखा हुआ है, या एक पर्टिकुलर ऑथर है जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत लिखा है, एक पर्टिकुलर ऑथर है जिन्होंने वुमेन जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बहुत लिखा है. तो अगर आपका टॉपिक ऐसा है एंड यू गेट अ पर्टिकुलर ऑथर हु हैज रिटन सो मच अबाउट दैट टॉपिक व्हिच इज योर टॉपिक, you can identify those people, you can contact those people, you can interview them, and you can take their guidance. This will help you. So this is literature review. Okay, I'll give you certain tips to write literature review. I have 7 minutes. I'll try to finish jitna hota hai, and after that we will cover the next part. Literature review के लिए पहला स्टेप है summarize and analyze the previous research and theories. Go through all the research. अच्छा, authentic research, हाँ, okay, no Wikipedia. Authentic research को आप पहले पढ़िए. उसमें से पढ़ने के बाद में note down what are their findings.
लिटरेचर रिव्यू के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें जो आपको पढ़नी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड 300 पेजेस का बुक्स एंड नॉवेल्स एंड रिसर्च पेपर्स एंड ऑल, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, उतना टाइम नहीं होता है। तो क्या करना है, आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, उन्होंने व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दीजिए, लास्ट में क्या फाइंडिंग्स आए, क्या सजेशन आए एंड व्हाट आर द कंक्लूजन, उतना पार्ट पे अगर आपने पढ़ लिया, यू विल गेट एन इंटायर आइडिया अबाउट द इंटायर रिसर्च एंड ऑन दैट बेसिस मेक द पॉइंट। यू विल सी कुछ रिसर्चर्स जो है, मेजोरिटी ऑफ रिसर्चर्स जो है थीसिस के एंड में लिखते हैं व्हाट इज द रिसर्च फर्दर रिसर्च स्कोप। फॉर एग्जांपल मैंने वुमेन पे रिसर्च कर लिया, सो देयर इज अ स्कोप फॉर डूइंग अ रिसर्च ऑन मैन, देयर इज अ स्कोप ऑन डूइंग अ रिसर्च ऑन चिल्ड्रन, सो आई विल राइट दैट स्कोप at the end, that what this is what I have not covered, and वो स्कोप आपके लिए रिसर्च गैप बन सकता है, उसको आप आगे लेके जा सकते हो। सो दैट विल हेल्प यू नैरो डाउन योर टॉपिक, डोंट गो फॉर द वाइडर टॉपिक, जितना आपका टॉपिक वाइडर होगा उतना लिटरेचर रिव्यू आपका बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो नैरो डाउन करो अपने टॉपिक को, यूज इंफॉर्मेशन विच इज एज करंट एज पॉसिबल, बहुत ज्यादा सी हिस्ट्री वगैरह अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ दिखाना है कि लास्ट ये हुआ था। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द कोरोना के ऊपर काफी रिसर्च पेपर रिसेंटली लोगों ने लिखा है, इसके पहले इस तरह के का पैंडेमिक आया था आई थिंक 100 years बैक, स्पेनिश फ्लू। ओके, सो वहां पे आपको पता है कि स्पेनिश फ्लू के बाद 100 years के बाद ये हुआ है, सो वहां पे आप पास्ट डेटा आपको देना ही पड़ेगा कि लास्ट ये हुआ था। बट अगर आपका साइंस टेक्नोलॉजी ऐसी चीजें जहाँ पे एवरीडे अपडेशन हो रहा है, रिसर्चर शुड प्रोवाइड करंट डेटा पॉसिबल। You can put your literature review in a chronological format, मतलब year wise 2000 2005 में क्या स्टडी हुआ, फिर नेक्स्ट स्टडी 7 में हुआ, फिर नेक्स्ट स्टडी 10 में हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप दीजिए। या तो थीमेटिक वे में भी कई लोग देते, थीमेटिक वे में तब सम टाइम योर रेफरी विल आस्क, अच्छा आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, कितना किया, अच्छा सर मैंने 80 लिटरेचर, अच्छा 80 में से आपका जर्नल्स कितना था, सर वो तो गिनना पड़ेगा, अच्छा बुक्स कितना, आपने पीएचडी थीसिस कितना किया, वो गिनना पड़ेगा। सो समटाइम वो वियर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, सो कई लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा थीम में देते हैं, बुक्स जो जितने रिव्यू किया उनको एक जगह पे डाल दो, उनके लिटरेचर रिव्यू, जितने जर्नल्स हैं वो एक जगह पे डाल दो, जितने रिसर्च पेपर है उनको एक जगह पे डाल दो, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन ऑर्गेनाइज, सो इट्स योर चॉइस अल्टीमेटली। Now coming to research methodology, it's all about how you collected data and how you are analyzing to analyze the data. So research methodology should include everything. आपने कैसे research किया, आपका sample, आपका research design, आपका data collection method, primary data use किया, secondary data. It will be combination of primary and secondary both, but obvious. प्राइमरी डेटा अगर आपने कलेक्ट किया तो कौन से टूल्स यूज किए, आपने क्वेश्चनर किया, आपने सर्वे किया, आपने ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया। देखो बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज स्पेशली हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के आप देखो, दे गो फॉर एक्सपेरिमेंट मेथड, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं दो ग्रुप्स के और लोगों के ऊपर, आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स में आता है, रिसर्च पेपर्स में आता है, दे कीप ऑन डूइंग रिसर्च ऑन ह्यूमन बिहेवियर, यू नो, सो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करते हैं। व्हाटएवर मेथड you have used, you need to mention here. Always use a passive voice rather than an active voice. Okay, I found that, I according to my opinion, don't use that, as per the researcher, as per the researcher recommendation, as per the, you know, like that. Direct and precise रखिए अपना, always write your research methodology in past tense, because thesis आप बाद में लिखते हो, research आप पहले कर चुके हो, so your everything should be in the past tense, not in the present tense. That you need to understand. रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही कई लोग यूज कर लेते हैं डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और फ्यू पीपल व्हाट दे डू, दे कीप अ सेपरेट चैप्टर फॉर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, इट्स योर चॉइस, बट डेटा एनालिसिस में क्या होता है, डेटा स्पीक्स, व्हाट डेटा स्पीक्स, आपका जो भी डेटा आया है आपको उसको प्रेजेंट करना है। ओके, प्रेजेंट करना है एंड अलाउ द डेटा टू स्पीक, व्हाट डेटा इज प्रेजेंटिंग, पुट इट एज इट इज, उस डेटा में से व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे एक बार डायग्राम में आपको दिख रहा है 2000 ईयर में सबसे ज्यादा लोगों का इन्फ्लेशन रेट सबसे ज्यादा बढ़ा था, 2008 में, 2007 में सबसे कम था, व्हाटएवर इट इज। तो जब आप प्रेजेंट करते हो, आपको उसमें जो इंटरप्रिटेशन मिलेगा, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन वन पैराग्राफ और 2-3 लाइन्स, that's interpretation. So data analysis is presenting the data, let the data speak in itself what it is, and interpretation is your viewpoint on after analyzing that data. How you're going to analyze, there are 3 steps. One is analyze the data.
what do the data say, what the data want to communicate. तो उसमें प्रोसेसिंग आ जाएगा, आपका एडिटिंग होगा, कोडिंग होगा, क्लासिफिकेशन होगा, टेबल बनाना होगा, ये सब एक्सेल में डालो। आई थिंक सर मुझे बता रहे थे कि आपका एक्सेल में एसपीएसएस वगैरह हो चुका है, तो वो सब एनालाइजिंग पार्ट में आएगा। एनालाइज आने के बाद में डिस्प्ले डायग्राम के थ्रू, बिकॉज डायग्राम्स, चार्ट्स एंड मैप्स एंड फिगर्स आर मोर इंटरेस्टिंग एंड कैची, यू नो, तो डिस्प्ले वाया सम पाई डायग्राम्स और चार्ट्स एंड ग्राफ्स, तो वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है और क्लियर कट व्यू भी देता है डिस्प्ले। After display, put your interpretation that from that chart or table, what you can understand, क्या आपको उभर के आ रहा है, you know, for example, majority of unemployed people are undergraduate, or majority of unemployed people are from so and so university, whatever, कुछ तो आएगा आपको, जो भी डेटा आएगा वो आपको मेजरली जो दिख रहा है उसमें, उसको आप 2 या 4 लाइन में इंटरप्रेट करोगे। So that is how the data interpretation is done. I think it's 5 o'clock. Participants, what do you want? Shall I continue with the second session after a break? Findings or recommendation part हमारा बाकी है, and plagiarism is pending. So what do you want? Shall we go for a break, or shall I finish with findings and bibliography wala part also? Tell me, as you say. Yeah, I'll show literature. Take a break. Yeah, that is what I'm saying, is too That's much. better actually. I'm also saying since last 2 hours. Oh my God, it's so much to say, because research को 2 घंटे में cover करना बहुत मुश्किल है. Okay, so the remaining part will be, हमने अभी तक cover कर लिया है research methodology and literature and all. The remaining part I'll be covering how to present your findings, how to present your recommendation, conclusion, and bibliography वगैरह कैसे present करना. I'll be also covering plagiarism also at the end. So we can take a break of half an hour and join at 5:30. 5:30, ma'am. Okay. Shall I leave? Or with your permission, ma'am? Hello. Hello. Yeah. So. They, I think Yes, sir. participants are responding in the chat box. Yeah. Yeah. Break. Okay. Fine. I understand. बहुत ज्यादा हो जाता है research एक साथ में. All the Okay, sir, no participants. problem. हम लोग break लेंगे मैडम half an hour का. Half an hour. I'll be joining link. at 5:30 at the same link. Okay, same fine. link. Fine. All the participants also requested to join with the same link. Thank you, ma'am. Yeah. We'll be joining at 5:30. Fine. Okay. Thank you. Bye. Have a tea break and come back.
Hello, good evening, everyone. We will be starting in a couple of minutes. Please wait for us. Okay. Yes, good evening, Seema ma'am. Yeah. Hi. Good evening. Shall we start? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Just a minute. I think there is some problem. Just a minute. Yeah. Okay. I'll start with the last part now. Okay, ma'am. So let me share my screen first. I think it's showing host had disabled participant screen sharing. So I think you need to give me permission for sharing. Hello. 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 Yes, madam. Yes, sir. I think. Am I able to share my screen now? Yes, Okay, 1 minute, ma'am. Yeah. Now you can. Okay. Sure, sir. Just a minute. Okay. Where am I right now? Yeah. So we were on the data analysis and interpretation last. So yeah, as I was discussing, am I audible, sir? I think there's some problem with my Bluetooth. So We can hear you, ma'am. Okay, fine. I will just remove it. It's better. Okay, so we were on the last part. This is important chapter because many people introduce this chapter into the research methodology, but preferably काफी लोगों को मैंने देखा है, they keep a separate chapter for data analysis and interpretation. So you can have it the way either way you want. Data analysis, whatever data you have collected. See here, data analysis and interpretation, frankly speaking, at the ground level, practically, it's not possible for us to analyze entire data, all variables, all parameters, unless and until you have a in-depth knowledge of statistical tools. Okay, so यहाँ पे data analysis interpretation आप अपने level पे कर सकते हो with the help of diagrams and with the help of graphs and tables and like that. बट उस एनालिसिस को आपके हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव से मैच करने के लिए
And to arrive at a conclusion or a proper discussion, you need statistician. So my advice to you will be, once you collect your data, just take a help or a guidance of a expert statistician, because हम कितने भी knowledgeable हो, कितना भी experts हो, we may be good in writing writing books or writing research papers or not, but statistics is something altogether a different area where you need experts. तो छोटा मोटा चीज हम कर सकते हैं. Like when you're writing research paper, you can do your own analysis on the basis of percentage, mean, median, mode, ये basic चीजें. बट एकदम हाई लेवल अगर आपको वेरिएबल्स को कनेक्टिविटी और इंटर रिलेशनशिप्स ढूंढने हैं, that is not possible at my level. For me, it is not possible because I'm not from statistics background, I'm not from maths background. So you need a statistician here in this chapter especially. I will personally recommend you, कई लोगों को मैंने देखा वो स्टैटिस्टिशियन के पास तब जाते हैं जब उनका पूरा डेटा कलेक्ट हो जाता है. So your data collection is done and then you are stuck up कि इसका analysis कैसे करना है, then somebody will advise you go to statistician, and then statistician is also not in a position क्योंकि आप data already ले चुके हो. Okay, so you have already collected data and फिर उसी में से जो बन पड़ेगा वो बेचारा आपको करके दे देगा. His job is to just process your data with the SPSS package or R package and give you whatever is the outcome. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, व्हेन आई बिलीव, गो टू स्टैटिस्टिशियन व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग योर क्वेश्चनर, the first step, or when you are selecting your title and immediately after that you're finalizing your research objectives. Go to statistician immediately, क्योंकि जब statistician के पास आज से 5 years back when I went at the time of preparation of my questionnaire. So questionnaire बनाते time ही अगर आप statistician के expert advice ले लोगे तो what will happen, आपका questionnaire वो इस तरीके से draft करने में आपको help करेंगे कि that should match with your research objective and your hypothesis and outcome. So आपका questionnaire already ऐसा draft होगा that whatever responses and data you will be collected, by default जैसे ही आप उसको पैकेज में डालोगे या सॉफ्टवेयर में डालोगे, आपको जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो वहां पे मिल जाएगा. लेकिन अगर आपका क्वेश्चनर गलत बन गया, आपका डेटा भी कलेक्ट हो गया, बाद में डेटा कलेक्ट होने के बाद फिर जो मिला फिर वो आपको हाइपोथेसिस को मैच करेगा नहीं करेगा, देन अगेन यू विल स्टक अप दैट इन दैट चक्रव्यूह. So personally my advice when you are doing your pilot study, because जब आप क्वेश्चनर बनाते हो, try with the 5 people first. 5 लोगों को अपना क्वेश्चनर दे दो भरने के लिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दीज टारगेट ऑडियंस जो आपका है, टारगेट ऑडियंस में से 5 या 10 लोगों को पहले भरवाओ and see that whether those 10 people are able to answer your questions all. Immediately after 10, once you complete, अगर वहां पे कुछ error निकलता है, go for 20, 30 or 50 people. And then once you're satisfied with 50 people or 100 people pilot study, then go for 600, 1000 or whatever is your sample size. Okay. So it's my personal advice, meet statistician, take their guidance at the initial phase of setting your objectives and preparing your questionnaire and doing your pilot study. Now, once your data is collected, data analysis hoga, processing hoga, editing, coding, you must be aware that I think आपके साथ एक session भी हुआ है recently that how to put your data in Excel and how to interpret it. Now, after interpreting, you analyze that data, display it via the graphs and charts, and you should interpret it in your own words. आपको ग्राफ में, टेबल में जो भी उभर के आ रहा है, जो भी मेन मेजर हाईलाइट दिख रहे हैं, put that under each criteria. That is how data analysis needs to be done. Coming to the findings, results, and discussion, it's very important because once you are doing your research, the major highlight of your research will be findings. जिस research में finding नहीं है, वो research किसी काम की नहीं है. Your referees, your guides, your research institute will first look at your title, your objective, and immediately jump to the finding. आपने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से व्हाट फाइंडिंग्स यू गॉट, सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर स्टडी. आप 2 साल 3 साल मेहनत करते हो, रिसर्च करते हो, तो उसका क्या आउटकम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फाइंडिंग्स इज बेसिकली व्हाट आर योर आउटकम्स. इट इंडिकेट्स व्हाट यू फाउंड इन योर रिसर्च. It discusses the relevance of your result and how your findings fit with other research area. So how your research results is relevant to your objective, relevant to your area. आपने टॉपिक कुछ और लिया, फाइंडिंग्स कुछ और हो रही है, वो नहीं होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है, फाइंडिंग्स कुछ और है, वो नहीं होना चाहिए. एट द एंड योर फाइंडिंग्स
should match with your hypothesis and objective. तो आपका एक एक ऑब्जेक्टिव मतलब आपको वापस से रिवर्स बैक जाना पड़ेगा जब आप डिस्कशन और कंक्लूजन पे पहुंचोगे तो यू हैव टू रिवर्स बैक, गो टू रिवर्स बैक, check with your objectives. आपका objectives क्या था? To identify the problem in so and so area. क्या आपने वो problem identify किया? Yes, it should be there in your finding that you have identified certain problem. Okay, identify to understand the awareness about, जैसे अभी एक thesis का title था awareness among so and so target audience. So at the end finding में आपको आना चाहिए कि whether target audience is aware or not. If they are aware, that how much, what percentage. So you need to put your findings with the concrete numbers, with numerical data. Okay, so here now the findings and discussion you can put together in one chapter. Okay, findings, what are your major findings? Don't highlight small things, highlight major things which you discovered during your research process. And at the end, after findings, immediately you write discussion. What is discussion? Hypothesis आपने जो और objectives आपने set किए हैं, your findings, how it is related to them. So here you need to take the help of statistician जो आपके variables को match करके देगा आपके hypothesis और objectives के साथ, and you need to justify your outcome, present a justification. आपका ये जो outcome आया, ये जो आपका finding आया, ये आपके objective, आप क्या चाहते थे वो आपको मिल गया. Okay, I wanted to study the customer perception towards e-banking. जैसे अभी एक topic हमने देखा था, क्या customer perception आपको मिला? What if मिला तो what was the perception? So you need to write down that perception and you need to justify yes, this was my objective and this objective is satisfied by this finding. So हर एक जो आपको finding मिलेगा वो कहीं ना कहीं objective के साथ आपको match करना पड़ेगा during your submission of thesis, and this part you are going to display here. You need to show whether the results are in line with your hypothesis. That is what I was, or objective. Okay, so कुछ hypothesis ऐसे हैं जो आप शुरू से लेकर चलोगे. Initially you may develop one or two hypotheses when you are starting with your research work. But जैसे जैसे आप research में आगे बढ़ोगे, hello, yeah. But am I audible? Hello. Yes, madam, you are audible. Yeah. So जैसे जैसे आप रिसर्च में आगे बढ़ते जाओगे, मैंने देखा रिसर्चर को और भी हाइपोथेसिस मिलते जाते हैं. तो देयर इज नो प्रॉब्लम. मतलब आपने 2 हाइपोथेसिस से शुरू किया, बाद में आपने 5, 6, 10 हाइपोथेसिस, आपको लगा कि अरे ये भी हाइपोथेसिस है, ये भी क्रिएट हो सकता है. यू कैन ऐड ऑन फ्यू हाइपोथेसिस ड्यूरिंग योर रिसर्च आल्सो बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट. दैट्स ओके. ओके, बट हाइपोथेसिस आप उतने ही रखें जितने के लिए आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं एंड में ड्यूरिंग योर डिस्कशन पार्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. After writing your recommendation, after writing your findings and the discussion part, you will be coming to recommendations and suggestion part. See, recommendation should be your own based on your research, what you have studied, what are your findings, and your recommendation should be connected with your findings. Suppose मेरे findings में मुझे मिलता है कि majority of people, for certain percentage of people are not aware about e-banking. This is my finding. Okay, now अगर मेरा ये finding है that people are not aware, this is the problem which I found. What is the solution to that problem? The solution to this problem, that we need to create awareness. How to create awareness? Maybe via educational institutions, maybe via seminars, maybe via group discussions with the research area, and some government initiatives with the help of NGO, something. So उस वक्त आपका जो finding है, आप एक साइड में अपनी फाइंडिंग रख लीजिए, और फाइंडिंग्स के सामने आप जो फाइंडिंग्स में जो स्पेशली फोकस ऑन द फाइंडिंग्स व्हिच आर इंडिकेटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि रिसर्च मतलब ही प्रॉब्लम है. यू नो, रिसर्च इज प्रॉब्लम. यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू डेवलप अ हाइपोथेसिस, यू कंडक्ट अ रिसर्च एंड यू कम आउट विद द फाइंडिंग्स. नाउ फाइंडिंग्स में जहां जहां आपको दिख रहा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, योर जॉब इज to provide solution to that problem, and that providing solution is nothing but the recommendation. So recommendation part में आप suggestion देंगे, suggestion for what need to be done as after your findings. Now when you're writing recommendation, you need to focus on few points. Just keep certain tips in your mind while you're writing recommendation, that it should be action oriented.
Don't write hypothetical recommendation. कि मतलब ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, जो इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, जो नहीं हो ही नहीं सकता है, वो आप अगर लिखेंगे, ओके, सो वो पॉसिबल नहीं है, डोंट राइट सच थिंग. ओके, सो राइट रिकमेंडेशंस व्हिच इज पॉसिबल फॉर पीपल. आप जिसको भी रिकमेंड कर रहे हैं, आप चाहे गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड कर रहे हैं, या आपके हायर अथॉरिटीज को, जिसको भी आप रिकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन शुड बी सच दैट पीपल आर एबल टू इम्प्लीमेंट योर रिकमेंडेशन. इट शुड नॉट बी चैलेंजिंग फॉर देम टू. उनके लिमिट के बाहर होए तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे रिकमेंडेशन आपका देख के मतलब क्या है? ओके, feasible ho in terms of money, in terms of resources, it should be implementable. Recommendation should be logically related to discussion and conclusion, as I was suggesting. आप अपने findings लिखेंगे, आपके discussion लिखेंगे, and your recommendation should be based on your findings and not your आसमान से गिरा हुआ रिकमेंडेशन आप अपने उसमें डाल रहे हो, या किसी और के थीसिस में आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन मिल गया और आप उसको लिख रहे हो. नो, it should be purely related to your findings, your topic, your area. So it should be logically related to your discussion. Recommendation should always be number, कि आप कितने रिकमेंडेशन दे रहे हो, 5 रिकमेंडेशन दे रहे हो, 10 दे रहे हो, 15 दे रहे हो. इंस्टेड ऑफ बुलेट्स आई प्रेफर यहाँ पे आप नंबर दो, so that when you present your data, you should be in a position that okay, on the basis of my finding, I'm presenting 5 recommendation, I'm giving 3 recommendation. ओके, सो नंबर डाल दो ताकि आपको लास्ट में एक नंबर मिल जाए कि इतने रिकमेंडेशंस आपने दिए हैं, rather than bullets. Arrange in order of importance. फाइंडिंग्स में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी व्हेन यू कंडक्ट योर रिसर्च. ओके, प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर इट मे बी. उस प्रॉब्लम में से आइडेंटिफाई वेरी क्रूशियल प्रॉब्लम व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड वेरी अर्जेंटली. ओके, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो मेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा अर्जेंट सजेशन और रिकमेंडेशन है, पुट दैट फर्स्ट एंड देन गो इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन अरेंज करने हैं. इट शुड बी ब्रीफ, डोंट पुट टू मेनी रिकमेंडेशन. 20, 50, 30 रिकमेंडेशन मत डालो जिसको लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद में उनको कुछ समझ में नहीं आए कि करना क्या है. So put brief recommendation. Thesis में generally होता है, we put recommendations, many recommendations, because after doing 2-3 years of research, you feel that I need to suggest so many things. But ultimately, try to keep your recommendation brief. Not only brief, but try to put them in a paragraph. सपोज अगर आप एक रिकमेंडेशन दे रहे हो तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी आप बताइए. तो पैराग्राफ और पॉइंट फॉर्मेट में अगर आप रिकमेंडेशन देंगे, इट विल बी इजी फॉर पीपल टू गो थ्रू इट क्विकली एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट exactly you are planning to put forward. So these are few tips. I'll be coming to conclusion part. As I was suggesting earlier कि हर एक जो research project है or maybe a research thesis, it includes 3 major parts importantly. One is introduction, the main body part, where we have just seen that it includes literature review and research methodology and all that. And the last part is conclusion. So what exactly conclusion is और इसमें क्या आना चाहिए वो important है. So basically conclusion is summary of the most significant results and findings. आपकी रिसर्च के बाद आपको सब क्या मिला, what is the outcome. आपको मिला बहुत कुछ होगा, हजारों चीज मिली होंगी, but उसमें से you will be not writing everything in conclusion, you will be writing only the highlighted and important findings here. So basically जो readers हैं वो आपका abstract पढ़ते हैं, objectives पढ़ते हैं, फाइंडिंग्स पढ़ते हैं और सीधा कंक्लूजन पढ़ते हैं. तो कंक्लूजन में क्योंकि बहुत ब्रीफ और समरी होता है ऑफ मेजर हाइलाइट्स ऑफ फाइंडिंग्स, so people those who don't have that much time to go through your entire thesis, they prefer to go directly to conclusion. So ensure that your conclusion is not repetition. आप वही लिख रहे हो, मतलब इंट्रोडक्शन में भी वही लिखा, फाइंडिंग्स में भी वही लिखा, कंक्लूजन में भी वही लिख रहे हो. So what's the use? So your conclusion should be summary of your entire research journey, basically your research journey. आपने कहाँ से शुरू किया, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या आपके फाइंडिंग्स हुए, एंड व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस. फाइंडिंग्स के साथ में रिकमेंडेशंस के साथ हाईलाइट करके put your conclusion in a summarized way.
In a research paper, conclusion could be of one paragraph, whereas in a thesis and all that thing, conclusion may go for 1-2 pages or 3 pages at the max, not 5, 10, 7 pages. Okay. Conclusion, if you see, you should always specify the further research scope also. तो सपोज आपने रिसर्च किया, लेकिन रिसर्च में आप सब कुछ नहीं कर सकते ना. यू कैन नॉट कवर इंटायर केरला एरिया, यू कैन नॉट कवर इंटायर पॉपुलेशन ऑफ केरला, यू कैन नॉट कवर इंटायर इंडिया. तो कुछ तो एक चीजें होंगी जो आप अपने रिसर्च में नहीं कवर कर पाए हो, and you feel that okay, after my research this is the area, still the scope is there to go further. So you can mention that, because your research scope, your further research scope will become a research gap that can be utilized by the further researcher. आने वाले जो रिसर्चर हैं जो उस एरिया में उस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, उनके लिए ये आप एक क्या बोलते हैं, चाबी छोड़ के जा रहे हो, एक की छोड़ के जा रहे हो कि भाई मैंने इतने तक कर लिया है, मेरी स्टडी में ये कवर नहीं हुआ है, एंड इफ यू वांट टू टेक दिस फर्दर, यू कैन टेक माय रिसर्च फर्दर विद दिस स्कोप. सो दिस इज हाउ. तो अगर आपको कुछ ऐसे थीसिस मिलते हैं जिसमें रिसर्च स्कोप लिखा हुआ है, फर्दर रिसर्च स्कोप अगर कंक्लूजन में है, दैट इज द बेस्ट थीसिस. द बेस्ट थीसिस का सबसे द एग्जांपल ऑफ बेस्ट थीसिस इज व्हिच ऑलवेज मेंशन रिसर्च फॉर फर्दर स्कोप. तो अगर आपको ऐसे जेन्युइन थीसिस मिलते हैं जहाँ पे फर्दर स्कोप का रिसर्च लिखा हुआ है, तो आपका लिटरेचर गैप तो वहीं पे कंप्लीट हो गया, रिसर्च गैप वहीं पे कंप्लीट हो गया. आपको वहीं से उठाना है और वहीं से आगे अपना रिसर्च कंटिन्यू करना है. हाँ, बट यू नीड टू इंश्योर कि उन्होंने किस साल में, किस इरा में ये स्कोप लिखा है. So somebody has written कि मेरे स्टडी में रिसर्च स्कोप इज दिस इन 2001. 2001 के बाद में किसी आपके और उस 2001 के बीच में somebody 2-3 people has already taken that scope and conducted research in that area, then फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा. Then you have to continue with the latest research people, the other people have done. Okay, so वो भी आपको इंश्योर करना है that जिस थीसिस में research scope hai, just try to find out that whether those research gaps and scope is not covered by any other the researcher. Okay, a few tips I'll give while you're writing conclusion. Just keep in your mind that conclusion should be arranged in a proper way so that the major conclusion come first. So सबसे major finding, क्योंकि लोग पढ़ते सबसे पहले ऊपर से, तो ऊपर में ही उनको अगर इंटरेस्ट लगा तो then go down, they will go down. Okay, तो अगर ऊपर ही आपने कुछ ऐसे conclusion लिखा है which is not irrelevant or not that catchy or attractive, so probably your referee and the research guide may not take effort to go through your entire conclusion. So जो अच्छे highlighted conclusions है उनको आप ऊपर लिखिए. Identify the major issues related to the case and give your interpretation. आप conclusion में आप अपना interpretation दोगे. Already आपने interpretation दिया, but यहाँ पे put your interpretation in a from a perspective of giving solution, okay, to the highlighted problem. Conclusion में always put that whether you are able to achieve your objectives, okay, what you have put in introduction. तो introduction में आपने जो objective लिखे थे, conclusion में वो objectives आपके achieve हुए तो कैसे achieve हुए, that you need to put, and list of numbered points. Okay, just conclusion में जो भी है आप एक चाहिए तो आप bullet डाल लो, यहाँ पे possible है, it's not necessary कि आप number डालिए, you can put in bullet points also or in a number format also. And follow logically. It should not happen कि पहला और second order में कोई connection नहीं है, जो so from priority basis पे logically you should arrange your facts and discussion in the conclusion. So that is how conclusion needs to be written. So be clean, cut, specific. Do not write too much. As I said, abstract अपना research paper में conclusion will be of 1 paragraph last. Whereas in terms of thesis, it could go for 2 or 3 page max. Do not go for 10, 15, 20 pages conclusion. Nobody is going to read that. And be brief, as I said right now. Okay. Coming to the last part, reference and bibliography. This is not a chapter, but reference is basically all the resources or sources, primary sources or secondary sources you have used to conduct your study.
आपने जो रिसर्च की, स्टडी की, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो लिखा इंट्रोडक्शन चैप्टर में, आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया, वहां पे आपने कहाँ कहाँ से डेटा लिया, मे बी बुक्स, मैगजीन, रिसर्च आर्टिकल, जर्नल, जहां से भी डेटा लिया, that entire list you need to put at the end, and that's called reference and bibliography. Okay, so all the references used in your study, references हम कहाँ कहाँ यूज करते, सी डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन तो हमारा खुद का है, बिकॉज वो ओरिजिनल होगा जिसपे हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है. रेफरेंसेस आपके मैक्सिमम यूज होंगे फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड दे रहे हो, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बता रहे हो, वहां पे रेफरेंसेस यूज होगा. और दूसरे आपके रेफरेंसेस यूज होते हैं लिटरेचर रिव्यू चैप्टर में. सो इन दोनों जगहों पे जितने भी रेफरेंसेस आपने यूज किए, यू नीड टू पुट फॉरवर्ड एट द एंड in a order and in a form of list, and that is nothing but references. Why it is important? Because it will provide original source to the reader. So suppose आज मैं जब thesis पढ़ती हूँ किसी का which is related to my area, लास्ट में रेफरेंस दिया हुआ है कि ये बुक से उन्होंने ये लिटरेचर रिव्यू किया है, I know from where that data is got, and I want to go through that book. I want to read that book which is available in library somewhere at a corner. So वो बुक कब की है, कहाँ की है, कब पब्लिश हुआ, which page from that data is taken. So जो आपका रीडर है, if they want to go to the original source after reading your literature review, you need to provide them detailed information from where you have taken that data. So it will be helpful for the reader. ओके, जो रेफरेंस है उसके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, बट रेफरेंसिंग स्टाइल में यू नो देयर आर डिफरेंट साइटेशन स्टाइल. आप लोगों ने शायद इसके नाम भी सुने होंगे. द मोस्ट पॉपुलर वन इज द एपीए स्टाइल. इट इज अ रेफरेंस पेज. एमएलए स्टाइल है, दैट इज आई विल बी कमिंग टू दिस, व्हिच इज अ वर्क साइटेड. एंड नेक्स्ट है शिकागो ए या शिकागो बी भी होता है इसमें, व्हिच इज अ बिब्लियोग्राफी. सो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोट किया, कई लोगों को पता भी नहीं होता है, बट इट्स अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी. यू नो, लास्ट का जो रेफरेंस पेज होता है, कई लोग वहां पे रेफरेंस लिखते हैं, कई लोग वहां पे बिब्लियोग्राफी लिखते हैं. ओके, एंड पीपल फील दैट रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी एक ही होता है, और अभी तक भी कई लोग उसको सेम समझते हैं, और जनरली पीपल टेक इट सेम यू नो सिनोनिमस समझते, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. इफ आप अपने लिटरेचर रिव्यू में एपीए स्टाइल यूज कर रहे हो, देन लास्ट का जो पेज होगा उसका नाम होगा रेफरेंस. द टाइटल विल बी रेफरेंस पेज. इफ यू आर यूजिंग शिकागो ए स्टाइल, आई विल टेल यू व्हाट इज इट. देन शिकागो ए स्टाइल यूज कर रहे हो, दैट इट विल बी कॉल्ड एज अ बिब्लियोग्राफी. ठीक है, एमएलए स्टाइल के लिए ऐसा कोई टाइटल फिक्स नहीं है. यू कैन राइट रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, दोनों में से जो लिखना है लिख लो, वो चल जाएगा. बट एपीए के लिए स्पेशली यू नीड टू मेंशन रेफरेंस, एंड शिकागो ए के लिए यू नीड टू मेंशन बिब्लियोग्राफी. सो दिस इज अ माइनर डिफरेंस विद दिस. दीज आर स्टाइल्स ऑफ राइटिंग ऑलरेडी दे हैव मेंशन्ड दैट दिस टाइटल यू नीड टू गिव. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी. एक और चीज है जो काफी लोग अपने थीसिस में ऐड करते हैं, दैट इज अपेंडिसेस. क्या होता है अपेंडिसेस? एनीथिंग which you want to give add on information which you were not able to give from chapter 1 से लेकर अभी तक. मतलब आपका जो पूरा रिसर्च स्टडी है जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, वहां पे कुछ और मोर कुछ आपको देना था, एडिशनल सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन which was you are not able to fit there, then you have a scope at the end. ये सेक्शन के अंदर अपेंडिसेस सेक्शन में आप डाल सकते हो. यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो? जनरली पीपल पुट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. यू मे पुट योर क्वेश्चनर. तो अगर आपने सर्वे किया है, क्वेश्चनर आपने बनाया है, तो you can put your questionnaire. Like in my thesis, I have prepared 2 questionnaire because my target audience was illiterate or low educated. Okay, तो मैंने उनके लिए हिंदी में एक क्वेश्चनर बनाया, एक इंग्लिश में बनाया, which didn't work. After that I realized it. So मैंने हिंदी में बनाया एंड एक मराठी में बनाया because महाराष्ट्र के अंदर था. So हिंदी, मराठी, इंग्लिश में जो मेरे 3 क्वेश्चनर बने थे, वो तीनों क्वेश्चनर्स मैंने लास्ट में डाल दिए थे. तो क्वेश्चनर आप कहीं बीच में नहीं दिखा सकते हो, तो यू कैन प्रेजेंट योर क्वेश्चनर फॉर्मेट एट द एंड. इफ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी डेटा में आपको कोई ग्राफ या सर्वे मिला है which you feel that was not, you are not able to fit there, you can put here. You can also put map
लाइक जैसे मैंने बोला कि अगर आप मुंबई पे स्टडी कर रहे हो, मुंबई एरिया में स्टडी कर रहे हो, सो पीपल दोज आर नॉट फ्रॉम मुंबई विल नॉट एबल टू स्टडी कि आप मुंबई किस एरिया की बात करें. सपोज आई से मुंबई सबर्बन एरिया, और आई से मुंबई सिटी, और मुंबई हार्बर एरिया, व्हाटएवर. तो अभी जो लोग मुंबई के नहीं है या महाराष्ट्र के नहीं है, दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप किस एरिया में आपने स्टडी किया है. तो फॉर देयर रेफरेंस व्हाट यू कैन डू, वो हार्बर एरिया का या सबर्बन एरिया का आप मुंबई का मैप हाईलाइट करके यू कैन पुट देयर एट द एंड, सो दैट पीपल नो कि ओके दिस इज द research area. Okay, so this information will come under the appendices. Each appendices must be named and numbered. आपके टॉप में आपका नंबर होना चाहिए. जैसे आप क्वेश्चनर दिखा रहे हो तो उसको हेडिंग डालो, क्वेश्चनर है, इमेज है, मैप ऑफ मुंबई है, whatever, it should be properly numbered and it should be shown in your table of content में भी आपका शुरू में दिखना चाहिए कि आपने लास्ट में क्या क्या appendices डाले. So this is how. Acha, okay, so before going to plagiarism, I'll just go through once what we have done. Just a minute. So we have covered all the just a minute. Let me come to that page and then I'll share with you. Okay, so now coming to the nutshell regarding thesis, we have covered this much area. We have covered preliminary material, जहाँ पे title, table of content, abstract आना चाहिए. I'll go through once. Title should be concise, indicating what is your report all about. Table of content होना चाहिए. Abstract should be summary of your main findings. Brief body report पे introduction आएगा. Literature review, research methodology, results and finding means what you found. Methodology means how you did it, what you did, how much your sample size, which area, कितना sample आपने कहाँ से लिया, sample selection कैसे किया, which technique you have used for sample selection, all that. Discussion आएगा where you will be correlating your findings with your research objectives. At the end, you will be putting recommendations. That is what is need to be done after your findings. Conclusion, which includes summary of your results and findings. Okay, and you can also put the research gap or weakness. आपके research में क्या नहीं था, क्या था वो भी लिखेंगे, क्या मिला वो भी लिखेंगे, क्या नहीं था वो भी आप conclusion में लिखेंगे. Last supplementary material में reference आएगा and appendices आएगा. So this is what is the entire structure of your thesis writing. Okay, more or less आपका thesis writing इसी line पे होगा, maybe 10-20% here or there. So I'll stop here for a minute just to make understand before going to plagiarism. Is there any doubts, any queries related to writing thesis or research paper? Then we'll go for plagiarism. Yes. Anybody? There is no response. I feel it's okay, fine. Hello. Madam, can you repeat the difference between the references and bibliography? Yeah, so reference and bibliography, just now I'll go on that slide. There is a minute difference, sir, nothing big. Yeah. See, मैं वापस से इसको कवर भी करूंगी साइटेशन में. अभी APA स्टाइल अगर आप अप्लाई कर रहे हो अपने लिटरेचर रिव्यू में और साइटेशन में, देन एट द एंड जो आप रेफरेंस पेज लिखते हैं, इट शुड बी लिस्टेड एज, उसका टाइटल रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस लिस्ट. इफ यू आर यूजिंग अ शिकागो स्टाइल, देन यू शुड राइट बिब्लियोग्राफी. आइदर वे चलता है, बट दिस इज मोर स्पेसिफिक टेक्निकली. MLA style में it is called as a work cited, but generally they don't मतलब they don't prefer people to write title. ऐसा MLA style अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है. You can write reference or you can write bibliography, either of. There is no specific
व्हाट यू से प्रॉपर की यही लिखना है, बट अगर आप एपीए यूज कर रहे हो तो यू शुड राइट रेफरेंस, और अगर आप शिकागो यूज कर रहे हो तो यू शुड राइट बिब्लियोग्राफी. Yeah, thank you, madam. Okay. Anything else? Shall you go ahead? Plagiarism. चलो ठीक है, प्लेजरिज्म पे चलते हैं. I hope since we all are research scholars and from the education field, इससे हमारा पाला पड़ता है plagiarism से. So what is actually plagiarism? You all must be aware. So plagiarism means presenting someone else's work as your own. किसी और के काम को अपना नाम चिपका के अगर आप बता देते हो, that's called plagiarism. Somebody else have done a research, somebody else have done a literature review, somebody else have done come up with some conclusion and finding. आपने उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया without citing, without acknowledging that person, and you are putting as it is your original idea and your own original thought. That is plagiarism. It's a cheating. As a researcher, it's a cheating. You should not do that. Plagiarism. When we were new and we were not aware about this concept of plagiarism, so हमारे एक resource person थे, he used to tell us plagiarism Chakravyuh है, Chakravyuh. So Chakravyuh is just like Abhimanyu went inside the Chakravyuh. Research एक Chakravyuh है, and Abhimanyu went inside the Chakravyuh, but he was not aware that how to come out of that. So plagiarism वो Chakravyuh है, so if you know आपको अंदर कैसे जाना है, आपको पता है रिसर्च कैसे करना है, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अगर आप वहां फंस गए तो उससे बाहर कैसे आना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेजरिज्म एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा चीज है जो आपको फंसा देगा कहीं ना कहीं. तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग योर इंटायर रिसर्च, कई बार मैंने इसे देखा है कि आप 2-3 साल रिसर्च करने के बाद आपका प्लेजरिज्म रिपोर्ट में इट गोज बियॉन्ड लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटी, और आपका रिपोर्ट, आपका रिसर्च आपको या तो पूरा रिवर्क करना पड़ता है या रिजेक्ट हो जाता है. तो इट्स अ बिग टास्क, मतलब ये बहुत बड़ा तो अगर प्लेजरिज्म के बारे में इफ यू आर अवेयर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इफ यू नो ऑल दोस टैक्टिक्स, एज आई सेड अभिमन्यु तरह, अगर आपको पता है कि चक्रव्यूह में जाने के बाद बाहर कैसे आना है, कहाँ पे ऑब्स्टिकल्स है, इफ यू आर अवेयर अबाउट ऑल योर with all your weapons you are ready, you can easily avoid it. Okay, so what exactly plagiarism is? People are aware about it, but still I'll go through it once. So using someone else's text as your own without citing the source, किसी और का लिखा हुआ आपने अपने नाम पे अपने रिसर्च में यूज कर लिया. It may be research paper also, not thesis only. Research paper में अपने नाम पे without giving them acknowledgement, without giving their name and citation and reference, that's plagiarism. Someone else text as your own but with insignificant changes. किसी और का आपने डाला यहाँ पे अपने पैराग्राफ या जो भी है, बट उसमें आपने थोड़े से चेंजेस कर दिए ताकि वो प्लेजरिज्म में पकड़ा नहीं जाए, और उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ वर्ड आपने चेंज कर लिया, थोड़ा सा मीनिंग हल्का सा चेंज कर दिया, बट ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है वही रहा, आपने कुछ उसमें अपना नया ऐड नहीं डाला. दैट इज ऑल्सो प्लेजरिज्म. कॉपी कर लिया आपने, सेम का सेम फ्रेज, सेम का सेम, जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट. मेनी पीपल डू दैट इफ दे आर नॉट अवेयर. काफी लोगों को पता नहीं होता, दोज हु आर फ्रेशर्स, दे डोंट नो. सो वो पूरा का पूरा किसी और का टॉपिक को पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर दिया. दैट इज ऑल्सो प्लेजरिज्म. या फिर आप चेंज करते हो, पैराफ्रेजिंग करते हो, बट यू मेक ओनली अ माइनर चेंज. थोड़ा बहुत टेक्स्ट में आपने चेंज कर दिया, सोर्स भी दिख दिया. आप बोलोगे अरे मैंने तो सामने वाले का नाम लिख दिया ना, मैंने एक्नॉलेज भी कर दिया उसको, तो अभी तो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा. नो, ऐसा नहीं होता. इवन इफ यू आर साइटिंग द सोर्स, इवन इफ यू आर एक्नॉलेजिंग द पर्सन, अगर उसके स्टेटमेंट्स आपने थोड़े माइनर चेंजेस करके अपने नाम पे डाल दिए हैं एंड दे आर टू क्लोज टू द ओरिजिनल, then also it is a plagiarism, even if you are citing. So try to as away from the original wording. आपका जो ओरिजिनल लिटरेचर रिव्यू सोर्स है, आपका जो स्टेटमेंट है या पैराग्राफ है, उसके पैराग्राफ मतलब आइडिया सेम हो, कॉन्सेप्ट सेम हो, उसके व्यू पॉइंट सेम हो, लेकिन वो उसके साथ में ओरिजिनल के साथ में मैच नहीं करना चाहिए. इट शुड बी
डिटैच्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, जितना दूर का आप लिख सकते हो, कीपिंग द सेम व्यू एंड व्यू पॉइंट, उतना आप सेफ हो। सेल्फ प्लेजरिज्म भी होता है। Self plagiarism, one of my colleague has faced it. She was a PhD student. She was writing a PhD topic. तो वो PhD में होता है कि आपको जो है कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, 3 या 4, 2 नेशनल 2 इंटरनेशनल। तो व्हाट शी हैज डन, अपना ही रिसर्च, जो PhD में जो रिसर्च वो कर रहे थे, उसी का रिसर्च में से उन्होंने उठा के जो है रिसर्च पेपर बना दिया और कॉन्फ्रेंस में डाल दिया। नाउ इट गॉट पब्लिश्ड। अब पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद में वो आ गया, इंटरनेट की दुनिया पे आ चुका है। When she went for the plagiarism report, उसका खुद का लिखा हुआ रिपोर्ट जो ऑलरेडी पब्लिश था, it was been caught under plagiarism. And then she was running from university here to there, explaining people कि ये मेरा ही है, ये जो plagiarism में आया हुआ है, ये मेरा ही टॉपिक है, मेरा ही रिसर्च है। So another important tip, if you are writing thesis, do not publish your thesis material in any conference. Conference में आप research paper लिखिए related to your topic, but try to keep it separate from your original PhD thesis, because अगर वो एक बार publish हो गया तो वो plagiarism में आएगा, even though you have done it, you are the original owner, it is called as a self plagiarism. It will not be accepted. Okay, so be careful about, अगर ये सारी चीजें आपको पता, you can easily avoid it. Yeah, very interesting how to avoid plagiarism, because when we were doing it, there were no guidance to us कि plagiarism को avoid कैसे करना है, and we were just we were doing our job, but at the end I realized कि yes, ये चीजें अगर करते तो शायद काम और आसान हो सकता था, you know. And there are certain softwares which are available. After plagiarism, I realized you know, वहां पे जो लाइब्रेरियन थे जिन्होंने मुझे प्लेजरिज्म रिपोर्ट निकाल के दिया था कुछ साल पहले, ही सेड, मैंने बोला ये ऐसे कैसे होता है, तो ही सेड कि जब आप कोई भी सेंटेंस कॉपी पेस्ट करते हो, आपने उस सेंटेंस को हटा दिया, अपना खुद का आपने नया सेंटेंस लिखा, ओके डन, तो ये आपका पूरा नया ओरिजिनल हो जाना चाहिए। फिर भी वो पकड़ता है, बोला मैडम ये आपका, अगर आपने स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस है ना, आई और एम के बीच में ब्लैंक स्पेस है, अगर वो स्पेस भी आपने कॉपी पेस्ट किया और वहां पे आपने नया स्टेटमेंट लिख दिया, दैट स्पेस इज आल्सो कॉपी पेस्टेड, दैट विल आल्सो बी कैच्ड इन प्लेजरिज्म। यानी कि ये जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं इतने हार्ड होते हैं कि अगर आपने रिराइट भी कर दिया और अगर वो कॉपी पेस्ट का जो ब्लैंक स्पेस है, व्हाइट स्पेस जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो भी आपके डॉक्यूमेंट में रह गया, उसको भी वो प्लेजरिज्म में लेता है। You should write completely new. That's very important. So how to avoid? Just see. You can avoid plagiarism by writing quotes or by paraphrase. These are 2 options. Paraphrase कीजिए या तो quote कीजिए, ठीक है, ये 2 तरीके हैं बचने के। तीसरा एक और तरीका है plagiarism detection service. Generally what I used to do, and even I advise my colleagues also, कि आप जैसे जैसे लिखते जाते हो immediately आप उसका plagiarism कराते जाओ। There are टर्निटिन है, उर्कुंड है, ओके, देयर आर लाइब्रेरीज जो थोड़े से पैसे लेके आपको ये करके देंगे। टर्निटिन में तो दे प्रोवाइड सैंपल प्लेजरिज्म रिपोर्ट ऑल्सो, ज्यादा पेज नहीं लेता है, 10, 20, 15 पेज, 2-5 पेज आप उसके अंदर डाल के अपना चेक कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, जैसे आपने चैप्टर 1 लिखा, इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया, उसको आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में, स्पेशली दीज 2 सॉफ्टवेयर आर वाइडली यूज्ड, तो आप टर्निटिन सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना एक पहला चैप्टर डाल दीजिए और देख लीजिए उसमें कितना प्लेजरिज्म आ रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है, रीचिंग बियॉन्ड 10% और 20%, इमीडिएटली स्टार्ट मेकिंग चेंजेस, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो पूरा थीसिस लिख लेते हैं, लिखने के बाद में यूनिवर्सिटी सबमिट करने से 1 हफ्ते पहले, इट हैपेंड विद वन ऑफ माय कॉलीग, पूरा थीसिस लिखा, सब लिखा, यूनिवर्सिटी सबमिट करने से 1 हफ्ते पहले वो प्लेजरिज्म रिपोर्ट आपको चाहिए होता है प्रिंटिंग के टाइम पे, उसके साथ में सबमिट करना पड़ता है। वो प्लेजरिज्म रिपोर्ट लेने के लिए 1 हफ्ते पहले उनको पता चला कि उनका प्लेजरिज्म इज गोइंग अराउंड 30 to 40%, एंड द डेडलाइन वाज विद इन अ वीक। सो आपका पूरा थीसिस आपको वापस बदलना है,
जहां जहां प्लेजरिज्म आ रहा है सारी चीजें आपको वापस लिखनी है, वापस पैराफ्रेज करना है. सो इट वाज अ बिग हेक्टिक टास्क फॉर अस टू हेल्प हर एंड फॉर हर टू फिनिश इट. ओके, लेकिन अगर आप ये शुरू से थोड़े थोड़े लेवल पे करते रहोगे, डू इट चैप्टर वाइज. जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है इमीडिएटली उसका करा दो, ताकि फेज मैनर में आपका प्लेजरिज्म चेक होता रहे, rather than stucking up at the end moment. Okay, this is one advice. So what is quote, what is paraphrase, how to avoid it, these two things I will be explaining now. Quoting क्या होता है? When somebody else words, you put it in your statement, in your literature review or your research work, word by word from the same source, placing it with the quotation mark and citing the source. जैसे आप डेफिनेशंस हो गए, ओके, तो डेफिनेशन तो आप बदल नहीं सकते हो ना. सो एंड सो पर्सन ने किसी जमाने पे डेफिनेशन दिया है, तो जो डेफिनेशन है दैट यू कैन नॉट चेंज. ओके, तो डेफिनेशन को आप वैसे के वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट रिफ्रेज इट एज पर योर ओन थॉट्स. तो उसको क्या करना है, आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेफिनेशन लिख लीजिए एंड गिव द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन दैट डेफिनेशन. तो जनरली प्लेजरिज्म में अगर आपके सेंटेंसेस कोटेड है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करता है, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल. इवन इफ इट इज डिटेक्टेड, वो विद इन दैट 10% का जो लिमिट है यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर वो आ जाएगा. सो दैट कोटिंग इज वन वे यू कैन अवॉइड, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग डेफिनेशंस. बट इट डजंट मीन कि हर चीज में आप कोट डाल दो और बोलो कि साइट कर दो कि ये बच जाएगा, फिर वो ऐसा नहीं चलेगा. ओनली सर्टेन एरिया like definitions or certain quotes given by some people or during some interviews, some articles, just you can put in the quotes and cite the source. That is possible. While quoting, you need to check. You need to check what? You need to check two things. Check your quotations are transcribed correctly. कि आपके जो quotes आपने डाले हुए हैं वो बराबर exactly वैसे ही हों और properly quotes हों. उसमें अगर कोटिंग में आपने थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो वो पकड़ा जाएगा फिर प्लेजरिज्म. ठीक है, एंड इंश्योर दैट यू वट एवर कोट्स यू आर पुटिंग दैट आर साइटेड करेक्टली. आपने वो कोटेशन, वो डेफिनेशन किस बुक से लिया, किस पेज से लिया, किस पेज नंबर से लिया, वो सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए. तो दैट इज वन वे कोटिंग. ओके, कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन इज paraphrasing. Now what is paraphrasing? आपको किसी का डेटा मिला, कोई लिटरेचर मिला, कोई रिसर्च पेपर मिला, कोई थीसिस मिला. You got some idea from that. You want to present that idea in your literature review, but do not present it as it is. आप उसको अपने शब्दों में बिल्कुल नया करके आप अपने शब्दों में. It may be 2 line, it may be 1 paragraph, it may be short, no problem, but write your original idea. Don't keep same points. Okay, so summarize or rewrite your, what is paraphrasing? Summarize और वापस से लिखना. summarize करो पहले, फिर वापस से लिखो अपने शब्दों में, instead of making a word to word quotation. So word to word आपको कॉपी नहीं करना है. आपने पढ़ा, पढ़ के बाद में उसको अपने शब्दों में और in your own original idea, adding your own new thoughts, you can write 1 paragraph. That is paraphrasing. यूज योर ओन वर्ड्स, एक्सप्रेस योर ओन अंडरस्टैंडिंग. कि आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा या थीसिस पढ़ा, आपको उसमें से क्या समझ में आया, आपको जो समझ में आया वो आपको अपने शब्दों में लिखना है. ओके, सो डू नॉट यूज दैट कॉपी पेस्ट वाला फंडा हियर. इफ यू डू दैट you may be in trouble. Okay, so now there are a few tips for paraphrasing. Always read the original text. लोग जनरली ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ते नहीं है. किसी ने कहीं से कॉपी किया, आपने वहां से कॉपी किया और दूसरे ने वहां से कॉपी किया, तो वो अगर ओरिजिनलिटी उसकी चली जाएगी. So it's very important that first you read entire text. Generally, as I have given you tips, it's very difficult to sit in library for 10 hours and read all thesis. वो possible नहीं है. ठीक है, so आप क्या करोगे, कोई भी बुक, कोई भी thesis है, you can read इनिशियल पार्ट, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए. क्या ऑब्जेक्टिव्स था वो पढ़ लीजिए. लास्ट में व्हाट रिसर्च मेथोडोलॉजी दे हैव अडॉप्टेड, व्हिच एरिया, एंड व्हाट वाज द फाइंडिंग एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन. इतना आप पढ़ेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा, रेदर देन रीडिंग 200 and 300 पेज का, यू नो. सो दिस इज अ शॉर्टकट. समरी पढ़ लीजिए आप,
and after that try to understand what was the entire thesis or literature about. Understand author उसमें क्या बोल रहा है, क्या उसने किया है, क्या काम किया है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या फाइंडिंग्स है. समराइज द इंफॉर्मेशन, नोट डाउन, आप नोट कर लीजिए जो भी आपको लग रहा है कि बहुत हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उस रिसर्च के और लिटरेचर के, नोट डाउन दोस पॉइंट्स एंड देन उन पॉइंट्स को एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स, हाउ यू अंडरस्टूड. उसने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसने जो बोला वो आपको कैसे समझ में आया, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड चेक योर टेक्स्ट नॉट टू क्लोज टू द ओरिजिन, जस्ट इंश्योर कि आप जो लिख रहे हो और उसने जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल मैच नहीं हो. कोशिश करो कि वो इट शुड बी नॉट टू क्लोज, इट एज फार एज जितना डिटैच आपका पैराफ्रेजिंग होगा, द मोर यू विल बी सेफ, you know. So the idea context should be same, but the wording and the framing should be changed. Check that you have cited the source, ensure that jo bhi whatever literature review you are using, in order to avoid the plagiarism, you write the proper source, the proper style. Okay, you can mention sources two place, एक आप टेक्स्ट में दिखा सकते हो लिटरेचर रिव्यू में, एंड एट द एंड ऑफ रेफरेंस, दोनों जगह आपको दिखाना है. So text reference में you are not able to say the entire, put the entire details of publisher, author, year and all that. तो वहाँ पे सिर्फ नाम और year आएगा as per the style whatever, और detail information you will put in the reference. But both the जगह पे आपका, दोनों जगह पे text में भी और last में जो bibliography या reference है वहाँ पे, दोनों जगह पे your sources need to be cited. Okay, तो आपने वहाँ ऊपर लिख दिया literature review में आपने लिखा है source, लेकिन नीचे reference में नहीं लिखा है, या रेफरेंस में आपने सोर्स लिखा है लेकिन ऊपर लिटरेचर रिव्यू में उसने आपने वहां पे साइट नहीं किया है. तो अगर दोनों में से कहीं भी मिसिंग है तो भी वो प्लेजरिज्म में आएगा. सो बोथ द प्लेसेस यू डू इट, दैट विल बी हेल्पफुल. ओके, गिव कंप्लीट रेफरेंस लिस्ट एट द एंड. So it's very important then citing your references, because when you're citing properly, you can avoid, not only avoid plagiarism, but you will give a good reference to the readers also. So citation means what? Citation means जब आप किसी का काम और आइडिया अपने उसमें लिखते हो, so you need to acknowledge that person or that work or that author. That entire thing is called as a citation. Okay, so basically when you are paraphrasing something, paraphrasing आपका जो है एक पैराग्राफ, मैक्स टू मैक्स 2 पैराग्राफ. मैंने देखा लोगों को मतलब 2-2, 3-3 पेज का वो लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, उसका हाथ किधर पैर किधर, देयर इज नो गैप, नो डिफरेंस, नो ऑथर का मेंशन, नथिंग, एंड इट्स जस्ट लाइक continuation of one paragraph after what second. So don't write paraphrasing in that way. Generally when I teach in class this literature review to my student, तो मैं उनको हमेशा example देती हूँ कि just आप जब कोई मूवी देखते हो, so for example you शोले मूवी काफी लोगों ने, सबने देखी है. जब आप शोले मूवी 3 घंटा देख कर आते हो और बाहर आने के बाद में when your friend asks you that what was the movie all about, so you don't sit and give 3 hours का पिन टू पिन और सीन टू सीन एक्सप्लेनेशन. आप 3 घंटे नहीं लेते हो उसको बताने के लिए. आप क्या करते हो, 3 घंटे की मूवी को उसको 3 मिनट में बता देते हो, क्योंकि वो एंटायर डिस्क्रिप्शन, देयर वाज अ विलेज एंड देयर वाज अ जय और देयर वाज अ वीरू और देयर वाज दिस एंड एट द एंड दिस हैपेंड, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ स्टोरी, ऐसे पिक्चर खत्म हो गई. सो आप क्या करते हो, सो दिस इज व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू. आप पढ़ते हो 200-300 पेज, लेकिन वो 200-300 पेज को आप एक पैराग्राफ में समराइज करते हो इन योर ओन वर्डिंग. सो हियर यू आर नॉट गिविंग, यू मे बी गिविंग डायलॉग, आप पिक्चर के डायलॉग भी बोलते हो, तो जो डायलॉग आप बोलते हो ना वो है कोटेशन, कोट करते हो आप. ओके, और जो स्टोरी को आप शॉर्ट करके अपने फ्रेंड को समझा रहे हो वो है आपका पैराफ्रेजिंग. तो जैसे आप 3 घंटे की मूवी किसी को बताने के लिए फिर से 3 घंटे नहीं लगाते हो ना. अब 3 घंटे की मूवी अगर किसी को नरेट करना है तो आप अपने शब्दों में बताते हो. यू यूज योर वर्ड्स, योर लैंग्वेज, योर आइडियाज, योर परसेप्शन, यू नो. ओके, सो वो योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट यू पुट इन दैट वे. अरे यार फिल्म के एंड में वो जय मर गया, वो अच्छा नहीं हुआ, टाइटल ऐसा था लेकिन एंड ऐसा होना चाहिए था. You put your understanding, your viewpoint or feedback on that, right?
So similarly, paraphrasing में भी literature review में, when you are reading 300 page का thesis or 50 or 100 page का book, you put in one paragraph, summarize in your own wording as per your understanding. That is literature review. Okay, now citation. Why you should cite? It's very important. जहाँ से जिधर से आपने information लिया है, write that. कहाँ से लिया आपने? Maybe book, maybe magazine, maybe whatever. Cite the sources. Why? Because when you're presenting something, you're presenting facts. So you are telling people कि देखो मैंने ये जो information और facts जो मैंने अपने research में डाला हुआ है, it has not come from sky. It has not jumped. It is not my own thought. मेरा opinion मेरा ये नहीं है. I am saying these claims on the basis of facts. तो मेरे पास evidence है, मेरे पास literature reviews हैं, उसके basis पे I'm putting these facts. So on the basis of literature review, you are able to, जैसे मैंने बोला ना, कोर्ट में जज को आप बोलते हो कि मेरे पास ये, I am putting this claim because I have this evidence. On the basis of my evidence, my claim is justifiable. So similarly here, collect the facts. It increases your credibility because अगर आप बिना citation के किसी का और का काम अपने शब्दों में लिखते हो और you are not giving acknowledgement to the people. So as a research scholar, it's little unprofessional thing, you know, in the world of research. So don't do that. Even it is easier, you are giving a reference to the reader also. Suppose अगर मैं आज आपका thesis या research paper पढ़ती हूँ, मुझे बहुत interesting लगा, and I want to know कि आपने ये कहाँ से लिया है data. So one paragraph में I'll not able to identify, then I'll go to your reference list. I'll identify आपने कहाँ से लिया, and I can go to the detailed research if I want to. So आप reader को थोड़ा सा एक reference दे रहे हो, reader आपका original source पे जा सकता है if they wish to. And the most important, avoid plagiarism. So if you want to avoid plagiarism, cite your sources. Without citation, it will be false. Now, how are you going to cite? That's also equally important. Citation in academic writing. Okay. Generally, there are three methods जो लोग popularly use होता है citation के लिए. One is the MLA style. That is modern language. There are a lot of styles, okay, but three popular styles है. एक MLA style है, AP है, Chicago style है. Chicago में भी A and B style है. But again, before citing, you should contact your university because जो foreign universities हैं में अगर आप कर रहे हो या इंडिया में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है तो उनके अपना ये होता है, वो अपने स्कॉलर्स रिसर्च स्कॉलर को बोलते हैं कि ये साइटेशन स्टाइल यूज करना है आपने. तो जस्ट कंफर्म विद योर गाइड व्हाट साइटेशन स्टाइल आपको यूज करना है, बिकॉज आप करने के बाद में पूछोगे तो कोई मतलब नहीं है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इवन देयर आर सर्टेन जर्नल्स, हार्वर्ड्स हो गया और जो भी यू नो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, उनके अपने साइटेशन स्टाइल्स हैं. तो व्हेन यू आर पुटिंग योर रिसर्च पेपर इन एनी सच काइंड ऑफ जर्नल जिनके खुद के एक स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल है कि आप ऐसे ही हमको रेफरेंस लिख के देंगे, तो जस्ट कंफर्म दैट बिफोर यू पुट देयर पेपर, बिकॉज अगर साइटेशन स्टाइल मैच नहीं होता है उनका जैसा चाहिए तो वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं जर्नल्स. ओके, so there is a lot of citation style. You may get a lot of information on various literatures on this different styles, but the popular one is the MLA style, AP and Chicago. So we'll talk about them a little bit. Okay. MLA style generally depend करता है आप कौन से discipline में research कर रहे हो. What is your discipline area of research? Okay, main area of research. So MLA style is generally used in the humanities, जहाँ पे literatures और language और humanities से related जो subject and core areas है, वहाँ पे MLA style use होता है. Similarly, दूसरे science और technology के लिए अलग styles use होते हैं, scientific field है तो. So MLA uses a parenthetical citation style. Now what is parenthetical citation style? जहाँ पे they prefer आप author का नाम लिखिए, page number लिखिए. So write author name and page number. So आप whenever you are writing literature review, suppose I am writing a thesis और मेरा thesis आपने लिया है, तो सीमा रावत 2021 में मैंने कुछ लिखा था, आपने उसको cite किया तो it will be रावत S और फिर year आ जाएगा bracket में. So my name will come. कौन सा पेज नंबर से आपने वो डेफिनेशन या पैराफ्रेज या वो जो है फाइंडिंग्स लिया है, पेज नंबर. सो दे प्रेफर ऑथर पेज नंबर. ओके,
आई गिव यू एग्जांपल आल्सो. साइटेशन आप दो जगह पे करते हो. एक तो आप जहाँ पे लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो पैराग्राफ, उधर आप साइटेशन करोगे और लास्ट में सेम उसी का, क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं एक पैराग्राफ, तो उस पैराग्राफ में यू कांट गिव पब्लिशर कौन था, कौन सा ईयर था, कौन सा पेज नंबर, which area and all that. So detailed information is not possible for you to give in that paragraph. So when you are writing in a paragraph, जब आप text में लिख रहे हो, तो वहां पे you just write author का नाम and page number. That's it. बाकी जो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है, पब्लिशर, ईयर, कहाँ पे, किधर, when, which city, which country it has published, which book, all that details you can put at the last. That is a reference page or bibliography. So दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे ये एक है, I've got this. I'll put one more also. जैसे एक स्टेटमेंट है, एक बुक है जिसके बारे में मैंने एक 2 लाइन में उसको अपना समराइज किया है. दिस बुक इज बाय द स्टीवर्ट एंड सिमॉन्स. ठीक है. The book uses success story from author own lived experience to make the case for a creative revolution in the business world. तो मैंने उनकी बुक में जो जो था उसके मैंने 2 लाइन में लिख दिया कि ये बुक जो है, it's all about the experience of revolution in the business world. So this book is all about business world revolution. Okay. ये बुक किसने लिखा है? There are 2 authors, Stewart and Simons. Okay. So 2 authors हैं और पेज नंबर मैंने ले लिया. So this is how you can write. You can write in the beginning also, you can write at the end also. दोनों चलेगा. When you are writing below at the work cited entry, MLA में उसको work cited बोला जाता है. It's not reference. So either you can write reference or bibliography, दोनों चलता है. Work cited लिखा हुआ heading आपको कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है. So here I am writing entire details of author. So I have written main authors, Stewart, Dave, Mark Simmons, उनका पूरा नाम मैंने यहाँ पे दिया है. वहां पे which book का नाम, which press and which year. So I am giving all details here. यहाँ पे सिर्फ मैंने उस बुक का, उस ईयर का पेज नंबर डाला है. So basically author and page number you can put. Other detailed information you can put down. Coming to the APA style, this is American Psychological Association style. सबसे ज्यादा widely used होने वाला style across India, all universities is APA style. Maximum लोग यही use करते हैं. Okay. Basically, this style is used in psychology and education. अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये style use करते हैं because we are in the field of education. So अगर आपका research paper education या psychological से related है, तो वहाँ पे APA style use होता है. Okay. So social sciences में APA style use होता है. यहाँ पे ये they use पहले वाले में they were using author and page number style. Here they use author date style. ठीक है. Now how the similar example I'll be putting here. Same thing. See the difference here. The book uses success story whatever एक लाइन में author का नाम डाला है. अभी देखो पेज नंबर के साथ साथ I have put year also, date. डेट मतलब आपको एग्जैक्ट डेट नहीं डालनी, आप चाहिए तो डेट भी डाल सकते हो. अगर कोई रिसर्च आर्टिकल है ना जो पर्टिकुलर उसी डेट पे पब्लिश हुआ है, so you can write also 29th November 2010, that also you can put. but यहाँ पे इतना टाइम, इतना जगह नहीं होता लिखने के लिए, because in text citation you should try to put it minimum. So rather than put date, you put year. That's sufficient. Okay. So they use author name and date. Page number is optional, you can put, but yes, ये parenthetical citation है तो you can put page number also. Now यही text citation जब आप नीचे डालोगे लास्ट में reference list बोल के डालोगे, now it will come in this way. Author का पूरा नाम Stewart, Simons, उसका year आपने bracket में डाल दिया. Now यहाँ पे if you see उनका ये आया है, नाम आया है, sorry सरनेम आया है, और नाम जो name है it will come in a initial. So suppose अगर मेरा नाम यहाँ पे लिखा जाता है, so my name will be put as a not Seema Rawat, I will be put as a Rawat S. So you put surname and then initial, then this is, since date method है, date आपको use करना है, कौन सा book use करना है, कौन सा press था वो use करना है, year आपने पहले use कर लिया है, page number already it is stuff. So थोड़ा सा ही little bit difference है basically author और date लिखने के system में. Okay. The third style is a Chicago manual style.
इसमें भी 2 स्टाइल है, बट जनरली लोग शिकागो ए स्टाइल यूज करते हैं. यू मस्ट हैव सीन मेनी लिटरेचर रिव्यूज जहां पे नीचे फुट नोट में उनका रिव्यू डाला जाता है, एंड नोट में. सो अगर आप एंड नोट में जैसे आपने पेज लिखा, उसी पेज में उसके नीचे डिटेल डाल दो, रेदर देन पुटिंग एट द लास्ट रेफरेंस पेज. सो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहीं डाल रहे हो, लास्ट रेफरेंस पेज पे डालने के साथ साथ आप वहीं पे डेटा डाल रहे हो. दैट इज द शिकागो स्टाइल, वेर यू पुट ऑल दी डिटेल एट द एंड नोट और अ फुट नोट. उसको बोला जाता है, इट इज यूज्ड इन ज्यादातर शिकागो स्टाइल हिस्ट्री में यूज होता है. इफ यू आर पुटिंग योर लिटरेचर रिव्यू फ्रॉम बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, वैदिक पीरियड में ये हुआ था, उसके बाद में ब्रिटिश इरा में ये रेवोल्यूशन आया, सो समथिंग लाइक दैट व्हिच इज डिकेड्स एंड डिकेड्स ईयर ओल्ड का अगर आप कुछ रेफरेंस दे रहे हो, so you can use this footnote style. Okay, so basically हिस्ट्री में इसको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट अगर आप लिखोगे तो सेम टेक्स्ट है. अब यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट सेम है, बट हियर आई हैव नॉट रिटन ऑथर का नाम, नो ऑथर का नाम, नो ईयर, नथिंग. इधर 1 डाला है, सिर्फ 1, बस इतना ही डालना है, 1. अब ये 1 क्या है, वो 1 नीचे आएगा. 1 का डिटेल यहाँ देंगे फुट नोट में, दिस 1, सी 1. अभी 1 के आगे मैंने पूरा डिटेल डाल दिया. ऑथर का नाम, पूरा नाम, ओके, पूरा नाम, सरनेम, योर एंटायर बुक का नेम. Here I have put the Berkeley, the area जहाँ पे वो है, न्यूज जो प्रेस है उसका नाम, एंड ईयर. So all detailed information यहाँ पे, nothing will come related to your author का शॉर्टकट वॉटकट वगैरह कुछ नहीं आएगा. सिर्फ एक मार्क आएगा 1 2 3 4. जैसे अगर आप सेकंड साइटेशन करो 2, थर्ड आएगा 3, फोर्थ आएगा, और सिर्फ वो नंबर को अगर आपको डिटेल देखना है उस नंबर पे जाओ, दैट विल बी पुट इन द फुट. सो दैट इज शिकागो मैनुअल स्टाइल. अगर मैं दोनों में अभी ज्यादातर, जैसे मैंने बोला कि वी यूज जस्ट अ मिनट, अच्छा इसके ऊपर ये टाइटल नहीं आया, कौन सा स्टाइल, एक मिनट, हाँ ठीक है. तो जैसे अगर आप देखो कि ये दोनों में मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंस भी ले लिया है. इट्स एपीएस स्टाइल एंड एएलएम स्टाइल. सी ऑथर का लास्ट नेम आएगा, ईयर आएगा, पेज नंबर आएगा. सो दिस इज एपीएस स्टाइल जहाँ पे वी एक्सपेक्ट टू राइट पेज नंबर. यहाँ पे ऑथर का लास्ट नेम एंड ओनली पेज नंबर दे आर एक्सपेक्टिंग. दिस इज सॉरी, दिस इज एपीएस स्टाइल एंड दिस इज एमएलएस स्टाइल. ओके, नाउ जब यहाँ को इसको आप लास्ट में साइटेशन करोगे, जस्ट नाउ जो हमने अभी देखा था, ऑथर का नाम, आपका उसका इनिशियल, ओके, यू कैन से ईयर, बुक का नाम एंड प्रेस. यहाँ पे भी सेम है, बट ऑथर के नाम का पूरा इनिशियल नहीं आएगा. इट विल बी फुल नेम, योर प्रेस नेम एंड योर ईयर. ओके, सो दिस इज हाउ दीज, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है नाम का, एंड हाउ यू राइट द नेम एंड पेज नंबर. So I have reached to the end. Okay, so basically you need to concentrate on certain things when you are writing your thesis. The structure is very, very important. Your plagiarism and citation is very, very important. Okay, conclusion, finding, these are very important. So those who are new to the research world, I'll advise you start writing research paper. छोटे छोटे 5-6 पेज के छोटे छोटे रिसर्च आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर आप लिखोगे, तो विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ नॉलेज. And whenever you are writing research paper, take help or guidance from your guide or HODs or जो तुमसे seniors हैं जिनको knowledge है. Show them, keep on showing. थोड़ा irritate होंगे लोग, लेकिन yes, अगर आपका भला होता है तो let them get irritated. So take guidance. Eventually academic writing, I'll say, it will not come in one day. एक दिन में आप नहीं समझ सकते हो, because इतना कुछ है इसमें, because I'm talking since last 3 hours and still there is so many things which I can talk. क्वेश्चनर बनाना एक अलग एरिया है, डेटा एडिटिंग, प्रोसेसिंग और उसको एनालिसिस करना इज अ टोटल ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एरिया. सो बहुत वास्ट है, वो आप एक दिन में या 2 घंटे के सेशन में नहीं सीख सकते हो. फॉर दैट, अनलेस एंड अनटिल यू नो इट्स अ स्विमिंग पूल, अनलेस एंड अनटिल यू जंप इनटू इट एंड स्विम डेली एवरी डे, तब तक आप उसकी स्विमिंग नहीं सीख पाओगे. सो दैट्स व्हाट आई विल से. So with this, I will conclude my session. Last half an hour I wanted to put for some practical part and some question answer session. So anything from your side first, let me know, then
Yeah, I'll stop my presentation. Seema We madam. can have a healthy discussion. Yeah, this last part I have kept for a discussion and some hand-on. Let me stop my sharing. Just a minute. I'm not able to stop my share. Okay. Because I'm new to this Zoom. Generally, I don't use Zoom. So that's only one thing. Yeah. Yeah, I'm back now. Yeah. So anything which you feel you want to discuss here at the end? Seema madam, I wanted Yes. to ask one thing that APA style में जब हम लोग author का नाम, then उसके बाद उसका publication year, and then title of the paper, and उसके बाद उसका journal name, journal name के बाद उसका page number और Right. लिखते हैं. तो journal name कभी कभी मैंने ऐसे thesis में देखा है कि journal name will be in italic. So it is compulsory to be in italic or it is नहीं, ऐसा नहीं है. It is not mandatory. Few people put it just to highlight. कई जगह पे मैंने भी वो देखा है. आप जर्नल नेम इटैलिक में डाल सकते हो. But ऐसा जहां तक मेरा नॉलेज है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. But generally people do it because क्या होता है, जर्नल का जो नाम होता है या पब्लिकेशन बुक की जो नाम होती है, वो कहीं ना कहीं क्योंकि ऑथर नाम पे सबका बोल्ड पे हाईलाइट जाता है. So you can do that. Okay, you can do that, but there is no such hard and fast rule because I have not done that. Even my research guide, when I asked कि यही question मैंने उनको पूछा था, बोला there is no hard and fast rule. हाँ, अगर if you are putting it to some journals, अगर आपके कुछ international journals हैं जिनका अगर आप उनके इसमें आप रिसर्च पेपर दे रहे हो ना, तो जब आप रिसर्च पेपर दोगे तो उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं रिसर्च पेपर सबमिशन के, एंड वेयर दे राइट स्पेसिफिकली कि आपको ये स्टाइल में लिखना है, ऑथर का नाम, इसका नाम, उसके बाद में इसको और उसको इटालिक करो. तो अगर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर जर्नल ने आपको बोला है ऐसा कीजिए एंड यू आर राइटिंग फॉर दैट जर्नल, यू कैन गो अहेड, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी. No, this is I was asking about thesis में जो हम लोग references. That is what thesis के लिए ही मैं बोल रही हूँ. thesis में आपका APA स्टाइल में इटालिक में होना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं. Okay. Yeah. And second thing, madam, plagiarism में जैसे for example Rawat has published in so and so, मैंने ये cite किया है in my literature review. Again Rawat R, मैंने Rawat S पहले किया, फिर उसके बाद Rawat R किया. Okay, when you go for the plagiarism checking, रावत को ही जहां मैं रिपीटेड कर रहा हूँ, यानी रावत जितनी बार आ रहा है, रावत एस होने दो, रावत टी होने दो, रावत टी होने दो, बट रावत को ही वो प्लेगरिज्म में लेता है. तो हाँ सर, प्लेगरिज्म में लेता है ना. आई टोल्ड यू ना, वो इट विल टेक स्पेस ऑल्सो. आपका खाली स्पेस अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, आपने पूरा स्टेटमेंट आपने उड़ा दिया और आपने उसके ऊपर अपना नया स्टेटमेंट, बिकॉज इट हैपेंड विद वन ऑफ माय कॉलीग, आई सेड ना, शी वाज वेरी सरप्राइज्ड कि आई हैव रीजनरेटेड द एंटायर पैराफ्रेज किया है, मेरे सब ओरिजिनल आइडिया, फिर भी ये क्यों प्लेगरिज्म में आ रहा है. देन द पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन सेड कि मैडम आपने कॉपी पेस्ट आप करते हो, कॉपी पेस्ट करके क्या करते हो आप, उसी वो जो सेंटेंस है उसको आप उड़ा देते हो, करेक्ट, और फिर उसी के ऊपर आप लिखते हो. करेक्ट ना. अगर आप उसी के ऊपर लिखते हो, प्लेगरिज्म में आएगा, क्योंकि आपने वो स्टेटमेंट उड़ाया, उसके बीच के स्पेस भी वो पकड़ लेगा. ओके, अभी मैंने भी ऐसे किया है मैडम. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कुछ लिखा है, उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए, समझो विद डाला, एंड डाला, ऑफ डाला. नहीं सर, विद एंड ऑफ ना, ये बहुत छोटे छोटे माइनर चेंजेस थे. तो उसने क्या किया सॉफ्टवेयर ने विथ वगैरह को छोड़ दिया. जो मैंने पैराफ्रेज के लिए जो अल्टरनेटिव यूज किया था ना, उसको भी पकड़ा. See, I'll tell you very simple. हाँ, अभी आप एजुकेशन वर्ड डालिए, ठीक है, एजुकेशन वर्ड डालेंगे, इंटरनेट की दुनिया में एजुकेशन वर्ड हर जगह लिखा हुआ है. करेक्ट. तो वो क्या करता है, वो अंधा प्लेगरिज्म, अंधा सॉफ्टवेयर होता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट. उर्कुंड इज वेरी खतरनाक, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो पूरा डॉक्यूमेंट दिखा देगा आपका, ठीक है. तो थोड़ा सा केयर आपको करना है. एज आई वाज सेइंग कि इनिशियली जैसे ही आपका पहला चैप्टर होता है, वो जो फ्री टर्निटेन या ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एक दो पैराग्राफ जैसे आपका वो डाल के आप चेक करते रहो
नहीं, मैंने भी वैसे ही किया, स्मॉल टूल करके एक ऑनलाइन प्लेगरिज्म right. चेकर है, उससे मैंने किया और इट इज अंडर कंट्रोल। हाँ, ओके ओके, नहीं वो आ जाएगा। सी दैट 10% प्लेजरिज्म जो यूनिवर्सिटी अपने को अलाउ करती है, दैट इज फॉर दिस ओनली, नो, बिकॉज हर चीज आप डुप्लीकेट, हर चीज आप फ्रेश नहीं कर सकते हो, राइट? तो दैट 10% के अंदर वो अगर आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट इंश्योर, बिकॉज इवन व्हेन आई डिड, आई वाज डूइंग इट कंटिन्यूअसली, वो मेरा भी जा रहा था 20-10, उसके बाद आई समहाउ आई चेंज एवरीथिंग एंड आई ब्रॉट बैक इट टू 3%, यू नो। सो उसमें क्या है, आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग चेंज करनी। जब आप वर्ड में जाओगे ना, तो यू कैन यूज सिनोनिमस, यू कैन यूज दी, यू नो, तो आप उसके जो ऑप्शनल वर्ड्स हैं और सिनोनिमस वर्ड हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल के, और पुट योर व्यू पॉइंट्स, यू नो। सो एग्जैक्टली सेम चीजें मत डालिए, थोड़ा बहुत आप सेंटेंस फ्रेमिंग को चेंज कर दे। इट शुड बी समथिंग, मतलब मेन आइडिया वही रहना चाहिए, मेन थीम और फाइंडिंग वही रहे, बट इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इमीडिएटली नहीं होगा, ग्रेजुअली यू नीड टू डू। आप वंस यू हैव रिटन वन पेज, गो फॉर अ चेक, देन चेंज इट, देन गो फॉर अ चेक, तो वो वैसे ही आएगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। या एनीथिंग एल्स? यस, थैंक यू मैम। या okay, somebody was asking about literature review का, और just a minute, no? See if I'll share just a minute. Literature review का मुझे किसी ने पूछा था, एक I will add that how literature review is done. It could be one line also, 2 lines also, 1 paragraph also. APA style में कुछ है मेरे पास. See, now here it is Priyanka Sharma Payal Agrawal 2015. So सिर्फ author का नाम और year दिया है, 1 paragraph दिया हुआ है. So this study is done this area. Study has revealed, see, they have given findings and research also reviews. So what are the findings? ये main यहाँ पे लिखा है. अभी देखो ये जो है यहाँ पे, this is only for 1 line. So and so person has studied the age, gender, income significant associated with that. That's it. Okay. So generally इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए. It should include at least आपका जो literature review, उसमें आपके findings होना बहुत जरूरी है. किसी ने अगर research की है, what are their findings and objectives? These two. So when you go through abstract, so it should be written in this format, author name and year. और इसका पूरा detail information आप जो है last में दे सकते हैं in your reference and bibliography. Okay. I'll come back to my one more thing. जब जो आप last के findings और ये लिखेंगे, ठीक है, recommendations. Okay. So for example, this is a chapter where findings, recommendations and conclusion is given. Okay. So यहाँ पे this is what I was saying कि just put a glance. You know, आप ये हर एक chapter के ऊपर लिख सकते हो. मतलब before starting of that chapter, put a glance of that chapter. और अदरवाइज शुरू का जो कंटेंट आपका है, इनिशियल टेबल, वहां पे भी डाल सकते हो. सो आइदर वे इज पॉसिबल. आई हैव रिटन इन द टॉप. नाउ फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन. सी आई हैव रिटन फाइंडिंग्स इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर. यहाँ पे फाइंडिंग्स पहले मैंने, बिकॉज आई हैव यूज्ड सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा, सो फाइंडिंग बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा भी मैंने लिया. few findings, so and so report, so and so survey, whatever. So जो भी मुझे findings मिली based on my literature review and secondary data, that I put. Okay. At the end, around there were 1920 there. And again I have put finding based on primary data. So primary data तो आप चाहिए तो दोनों भी findings दिखा सकते हो. Literature review में whatever findings you got based on secondary data, and you can put your primary data. So you can see, like here, see, the number should be concrete. Suppose if I write some domestic worker belong to open caste, some नहीं होना चाहिए, या majority, कई लोग लिखते majority of people of open caste. Don't write majority, don't write some. Be concrete with your number. Write particular percentage. That's very important.
ठीक है, this many percentage stay in rented house, this many percentage. So this is जो मेरे को data analysis मिला, I have written in a proper concrete findings format. So these were findings. अभी ये जो findings थे, on the basis of this finding I have numeralized and I have given see, like here 54% domestic workers say they lost their job due to leave, 70% lost their job due to going to village, 76%. So like that. So एक एक एरिया जो एरिया और इशू था उसके ऊपर one finding, one point of finding I have put. Now these are again the finding which I have taken, and if I go to the last recommendation. Now recommendation always try to put in a paragraph form. आप दो line में recommendation डाल दोगे ना, it should be done, it should be done, it should be done, NGO should do this, government should do this. Don't do like that, you know. So जो भी आपका व्यू पॉइंट है, रिकमेंडेशन और सजेशन है, गिव इन अ वन हेडिंग. आप उसको एक हेडिंग दे देंगे और एक पैराग्राफ में उसको प्रॉपर्ली देंगे. इट विल गिव यू मोर वेटेज टू योर रिकमेंडेशन. जैसे मैंने यहाँ पे दिया रिलायबल डेटा ऑन डोमेस्टिक वर्कर. सो आई फाउंड दैट देयर वाज नो रिलायबल डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. सो देयर वाज अ नीड कि एक कोई कमिटी हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो जो स्पेसिफिकली इसके लिए डेटा करे. सो दिस इज द सिचुएशन. Another one, implementation of law. There was no specific law, only hardly 1 or 2 laws. So specific law for. So ये आप जब टाइटल पढ़ रहे हो ना, ये टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ रहा है that what I'm recommending inside. Okay. For example, minimum wage होना चाहिए domestic worker के लिए. So though my paragraph I'm explaining everything how it should be implemented, but a title is giving a brief view to my referee that this is what I'm recommending. Written labor contract होना चाहिए. सोशल सिक्योरिटी मेजर होना चाहिए, यूनियंस होने चाहिए. सो बाय दिस टाइटल इफ यू गो इन दैट वे पीपल विल बी एबल टू इट विल गिव मोर वेटेज. एंड कंक्लूजन जो लास्ट में है, आई हैव स्टार्टेड माय कंक्लूजन फ्रॉम द बिगिनिंग. आपने कहाँ से टाइटल से शुरू किया है, क्या टाइटल था, कितना आपने लिटरेचर रिव्यू किया, कितने आपने बुक्स किए, सेकेंड चैप्टर, देन व्हाट यू गॉट at the end, what are your findings, little bit एक paragraph of finding के बारे में लिखिए. Findings के बाद what are your recommendations, again it will be there. Okay, and at the end, very important, I have written a further research area. So suppose my studies was on women domestic worker, so I have done on the women domestic worker, whereas men domestic worker के ऊपर भी research हो सकता है ना, possible है, you know. So I have done on their status and social issues. Somebody can do on their welfare issues. I have done on women domestic workers, but you can do a separate on part-time or full-time workers. You can do on placement agencies specifically. You can do on employers. Okay. I have done entirely the entire group of domestic workers, women domestic worker. You can do it on the members only, those who are only from union members. So I have given a scope at the end for the further research. So this is how a good thesis. Just I was showing so that should be done. So, but best way is whenever whatever you are doing, आपका लिटरेचर, आपका जो भी ये है, एक तो प्लेगरिज्म आप बार बार चेक कराते रहिए और अपना रिसर्च अपने गाइड को बार बार चेक कराते रहिए. ये 2 लेवल का चेकिंग कीप ऑन डूइंग कंटिन्यूअसली बिफोर यू एंड अप विद बिग ट्रबल. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Ma'am, there are few questions in yeah chat boxes. Hello. Donka ma'am. Yeah, Dr. Donka ma'am. Yeah. मैम आई एम फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर. मैम मैं पोर्ट ब्लेयर से बोल रही हूँ. या मैम. हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, जैसा ईयरली लेते हैं या अल्फाबेटिकली है या वो डिसेंडिंग है और असेंडिंग में? Yeah. There are 2 ways. See, if your research is something which is based on history and pre-data. तो अगर आपका रिसर्च ऐसा है जो 2009 में किसी ने किया, फिर 10 में किसी ने किया, फिर आपने 13 में किसी ने किया, फिर उसके आगे आप कर रहे हो, तो यू कैन पुट इन अ ईयर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, कि पहले इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, फिर अब आप कर रहे हो. दैट इज वन वे. अनदर वे इज यू कैन पुट इन अ थीमेटिक वे. लाइक मैंने कैसे किया था, जितने भी आपने बुक्स यूज किए लिटरेचर रिव्यू में, पुट देम इनटू वन ग्रुप, एक साथ ले लो. उसके बाद सेकेंड फेज में आप put all research journal. Third phase में you put all your research thesis, so 10-12 thesis.
So you can put in a section wise literature review mein 10 thesis, 50 research papers, 30 research journals. So like that also. So thematic way mein you can put, or chronological order mein you can put. Choice is yours. Thank you, ma'am. Yeah. Hello. Yeah. Ma'am, just now, as you said, ma'am, that the thematic way can go. So even in the thematic way, once if I put all the research papers together, 50 research papers. So even in that research paper, which sequence to follow? For example, 2007, now 2020, 22. That would be great. That would be great. अगर thematic way में भी आप उसको chronological order में डालते हो, that's very apt. Very good. Okay. So according to section, first we have to bifurcate and then yeah. Because वो फिर एक logical बन जाता है ना. It gives a logical sequence that over the time period कहाँ पे development हुआ है. Okay. तो वो मतलब recent से older चाहिए. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Ma'am, this Ashwini R is asking something. Ashwini madam, you are there? Yes, sir. Good evening. Yeah, Ashwini ma'am. Good evening, ma'am. First of all, thank you so much for this wonderful, informative session. Yeah, thanks a lot. Welcome. Ma'am, I'm pursuing my doctorate. I'm from management and HR background. So of late, we have been finding articles wherein the title, they are using the intermediate variables which they have used to prove their study. Okay. Like there are, I'll just give an example. If I want to understand how is job satisfaction affecting the retention of employee. Okay. So there are so many variables I'll be using for the study. So something which has not been used before, if I'm using it, that is being mentioned in the title. So is it okay to mention all the intermediate variables that have been taken in the study in the title? See, it's not necessary. See, if you put too many variables, it will be difficult for you to prove your hypothesis at the end. So what I suggest here, you take advice of your statistician. Okay. आपके कुछ dependent variable होंगे, कुछ independent variable होंगे, कुछ parameters होंगे, right? Okay. So those variables should match with each other and relationship इस तरीके से आपका आना चाहिए कि आपके hypothesis को match कर जाए. Don't take all variables which is unnecessary or not relevant to your studies. आपका study scope क्या है? What is your study objective? आपका objective देखिए, उस objective को satisfy करने के लिए which variables are important? टेक दोज इंपॉर्टेंट. लिटरेचर रिव्यू में आप बाकी लोगों ने अगर कोई किसी और वेरिएबल पे स्टडी किया जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ओके यू कैन टेक बिकॉज यू आर डूइंग अ स्टडी. तो उसमें आप स्कोप बढ़ा सकते हो. बट जहां पे आपकी स्टडी की बात आ रही है वहां पे स्टिक टू योर वेरिएबल्स होंगी. आप क्या वेरिएबल पे स्टडी कर रहे हो एंड ऑलवेज टेक वेरिएबल्स की जहां पे बात आती है, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर स्टैटिस्टिशियन बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस लास्ट में वो वेरिएबल्स के आउटकम के साथ मैच होना चाहिए. Okay, ma'am, same question. I would like to put it this way. Let's say there are so many studies which are carried out on the same topic, पर एक दो मेरे concepts ऐसे हैं जिसने like किसी ने भी study नहीं किया है. Right. Should I include those parameters in my title just to make it stand out of all other papers? Of course, that is what literature review is all about. That is all your study is all about. What people have not done, you are doing it. That's all. That's the originality of research. So my title में वो डाल सकती हूँ मैम those variables that I'm using these variables in this study. Putting variables in title will make it I don't know how your title will be reframed and how it will, because once I read that only it will be. What will be your title? Like one study, ma'am, just example, I was doing literature review about job satisfaction, organization commitment, how it is affecting turnover intention or retention of millennials. Okay. So बहुत सारी variables हैं यहाँ पे. Theory XY हम use करते हैं, intrinsic motivator, extrinsic reward, and then we have a person and organization fit, leadership, so many. So if I have to take a person and organization fit as a construct, which is rarely used in studies, so can I put it in my title? Yeah. Then you can put that. Because if you put too many variables in the title or somewhere, it will be, because your area will become too vast. फिर उसको narrow down करना और उसके ऊपर literature review आपका बहुत vast हो जाएगा. आप उसकी findings कैसे हर एक को justify करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. So just narrow down to what you are saying कि this area is not been touched. Go ahead with that. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah.
मैम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। नॉर्मली थीसिस के लिए, रिसर्च पेपर के लिए मैंने एक ये अटेंड किया था लेक्चर, तो उसमें उन्होंने बताया कि रिसर्च पेपर में 2 ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि नॉर्मली जो है लोग जो है 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जेक्टिव्स डाल देते हैं। कि ऐसा होना चाहिए कि एग्जैक्टली रूल्स के हिसाब से कितना ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च पेपर के लिए और थीसिस के लिए होना चाहिए? Right. See, research paper is basically it's not in-depth research. See, आप जो thesis लिख रहे हो, जो PhD research करो, that goes around 2-3 years or sometimes it's 5 years. Correct? So वो area of scope is very wide compared to research paper. Research paper आपका 6-7 पेज बस हो गया. That's okay. अभी 6-7 पेज में आप कितने ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई कर सकते हो? राइट, सो ऑब्जेक्टिव्स आपका, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, लिटरली आपका जो रिसर्च पेपर है 2, दैट इज व्हाट 2 या मैक्स 3, बिकॉज जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतने ऑब्जेक्टिव्स आपको लास्ट में जस्टिफाई भी करने, दैट with this objective you have come up with this finding. Okay, so more the number of objectives, more will be wider of your study area. ओके, थीसिस वगैरह में यू कैन, अच्छा थीसिस में भी, पीएचडी थीसिस में आई विल प्रेफर कि आप 6-7 के ऊपर, 7-8 के ऊपर मत जाइए, 6-7, 5-6 बस हो गया, बिकॉज जितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतने आपके लिए उसी पैरामीटर पे आपके हाइपोथेसिस होंगे, उसी में आपका एरिया वाइड हो जाएगा। रिसर्च पेपर के लिए 2-3 मैक्सिमम। 8-8 ऑब्जेक्टिव कौन लिखता है? और 8-8 ऑब्जेक्टिव को उसको पूछो वो 8 ऑब्जेक्टिव आपने कहाँ पे उसका फाइंडिंग्स बताइए, कौन बता पाएगा? आप बताइए। The people, those who are putting 8 objectives in a research paper, ask them one question. This is your objective. Tell me आपके research paper में where this objective is satisfied. Will they able to answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर No. Yes. आप 2 या 3 ऑब्जेक्टिव डालिए और उसके ऊपर ही put those objectives and justify those objectives within given time. I mean the page frame. Yes. 6-7 पेज में कैसा आप 8 ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, थीसिस में मैम 4 ऑब्जेक्टिव एनफ है ना मैम? या सी ऑब्जेक्टिव्स का देयर इज नो सच क्राइटेरिया कितने होने चाहिए। इट कैन गो फॉर 4 और 5 और इट्स फाइन, बट यस व्हाटएवर यू आर पुटिंग, पुट इट इन डेप्थ एंड जस्टिफाई दैट, दैट्स ओके। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। या फाइन, थैंक यू। Any other question? Hello. हाँ, जिसमी मैम, जेनिस मेरी, हाँ, Yeah, I just wanted to ask the review of literature that you shared. Now when we are writing, after we read, it's done. After we read. Anybody else? Ma'am, just Nadar madam is saying something, I guess. Okay. Am I audible, sir? Yes, you are audible to me. I don't know, ma'am. या काफी लो आ रहा है उनका आवाज। नाडर मैडम, या प्लीज। Okay, ma'am, sir, can you then translate the same thing that I put on the chat? Is that जब मैं literature review लिखूंगी, I should not be copy pasting from the abstract to my literature review, right? मुझे उसको अपने शब्द में लिखना पड़ेगा। No copy paste, no copy paste, and no citation there, right? No copy paste, and it should be your, see, you can take the idea but put it in your own words. Okay. No copy paste. Once you copy paste, even I said no, plagiarism में अगर आपने space भी रह गया आपका copy paste में, तो वो space को भी पकड़ लेगा, blank space को. So please don't do that. Okay. Thank you so much, ma'am. Yeah. But citation देना है ना मैडम उधर? Yes, sir. Citation देने के बावजूद भी, even if you are giving citation, it doesn't mean कि आपने citation दे दिया तो हो गया, चल जाएगा। She is asking that कि extract statement देने के बाद no need of giving citation. नहीं, citation you have to give at any cost. Okay. Citation तो देना पड़ेगा, लेकिन citation दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप copy paste कर सकते हो। Not. Okay. Yeah. Okay, any other question? Ma'am, one question is there in chat box. What to do about such variables on which
review of literature isn't available? See, the variables on which review of literature is not available, you don't have to worry about it, because these are new variables on which you are studying, and the other people have not studied. This is something new. Okay, so you can study on those variable. It will be your original study. It's not necessary कि आप जिस variable पे study कर रहे हो पहले किसने उस पे किया हुआ है. आप नए variable पे study कीजिए. Your statistician को आप बोलिए, these are my variables, I want to study on this, and collect your data with those variable and questionnaires and give it to your statistician. वो आपका correlation निकाल के आपको पूरा analysis करके दे देगा. So even if your variables are new, it's okay. If your literatures are not available on that, it's okay. Then that research can be registered for patent because it is a new. I'm not getting. See, if literature review is already, I mean, literature is already written on that particular topic, which revolve around your topic, but not exactly that variable. आपने कुछ नया variable पे study कर दिया उसी topic से related. That's fine. That's fine. मैडम उसको patent भी कर सकते हैं ना अगर नया variable पे काम करते हैं. Yes. That is originality ना. किसी और ने नहीं किया जो आप कर रहे हो उसी में add कर रहे हो. That's okay. Yes, you can take away the old studies as a literature review, especially history and जो भी chronological order में literatures हुए हैं, you can put that. You can put old studies. That's only literature review. Old studies and the studies done so far in that particular area is literature review. Any questions, participants? हेलो मैम. या अनुपम मैम बोलिए. मैम एक्चुअली मुझे मतलब लिटरेचर मैंने ढूंढा है मतलब गूगल स्कॉलर और आई थिंक कुछ और एक नाम है, तो उससे मैंने लिटरेचर कलेक्ट किया है. बहुत सारा रेफरेंसेस मैंने कलेक्ट किया, पर आप अगर सजेस्ट करोगे कि कोई अगर कुछ और मतलब लिटरेचर रिव्यू के लिए कलेक्ट करने के लिए मतलब कुछ और साइट्स है भी या नहीं, मतलब तो इजी होगा मेरे लिए. See, I think Google is very simplest way for all of us to sitting at home and getting literature review. But if you can go to library, authentic libraries, maybe Mumbai University Library, or there are some library, Indira Gandhi National University Library है गोरेगांव में, and in your research area, आपके area में, so बेसिकली आपके जो रिसर्च जर्नल्स हैं, ऑथेंटिक रिसर्च जर्नल्स होने बहुत जरूरी है. इफ यू कैन विजिट लाइब्रेरी दैट विल गिव यू सम एडेड एडवांटेज, बिकॉज वहां पे इवन व्हेन आई विजिटेड मुंबई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मुझे उस जमाने की किताबें मिली हैं विच आर रेयर बुक्स. दैट इज समथिंग व्हिच आई नेवर गॉट ऑन माय गूगल एंड ऑल. तो गूगल में क्या होता है, जब से ये टेक्नोलॉजी आई आपको लेटेस्ट चीजें मिलती जाएंगी, बट ओल्ड डेटा जो है ना, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो ओरिजिनल बुक्स हैं, यू विल गेट इन लाइब्रेरी. So for PhD and all that, PhD thesis and all that, शोध गंगा is a good option. शोध गंगा में आप जा सकते हैं, वहां आपको PhD thesis मिल जाएंगे उस टॉपिक से related, you can take, that is one. But rather apart from that, I'll ask you to go for academic database also. Many search engine. Yeah, you other can than Google. Any other search engine? Google में Scholar, वही Google Scholar is one option. शोध गंगा is another option. I have used these two. But majority of remaining my literature review I have done via all the thesis kept in the library of university and other research centers. So this is my personal experience that those data which will be more authentic and more in depth compared to what available on the internet. Okay ma'am. Thank you. Research paper लिखने के लिए okay fine, you can use the Google Scholar and शोध गंगा, that's enough. But for thesis you should cover entire scope, more wider. Any other questions? Okay, now I request all the participants to on their video so that we can take photograph. Yeah, Tushar sir, it's only you and me, I guess. Others have done. Okay. I don't know.
Okay, thank you, participants. Now I request Dr. Lata Krishnan Madam to give formal vote of thanks. So we've had a very interesting session today. On behalf of the participants, the principal, teachers and management of Mahatma Nai Degree College of Arts and Commerce, Dr. Seema Rawat, we sincerely thank you for a very productive day. And first of all, let me tell you that you are a very, very passionate researcher, because you started off by asking questions, and as a good teacher, as a good research guide, you wanted to ensure that all the many questions that the participants had in their heads were addressed at this workshop. So I think it was a very productive day, excellent day, because all those questions that jump out of our minds, out of our heads as researchers were all very, very well handled by you. Ma'am, you had excellent slides, and very patiently you took us right through the process, steps, do's and don'ts of how to write a research thesis, also moving into writing research papers. It's your patience, your passion, and the way you have written your own research thesis, that you keep going back to it. And we always say, when you create something, you love it so much and you want to share it, and you want to make sure that others learn through your experiences. And this is how an excellent researcher and an excellent teacher shares his learnings. And hats off to you, ma'am. You've kept the whole group glued to your talk. And I think it was something that we learned and revised, and we will make sure that we follow all the do's and don'ts, particularly the plagiarism bit. Your experience you shared with us, we would just scratch our heads and wonder why, but you told us why. So I thought that was fantastic. Ma'am, on behalf of all the students again, and for all the questions that came, and our session has been extended, and I'm sure if I allow, they will ask you so many more questions. But thank you so much, and we hope that you join with us again in our future research projects. Have a wonderful evening. Thank you so much, ma'am. Thank you, Lata, ma'am. It was nice having interacting with all people. I was like 2 hours, I'm talking 3 hours, and people are sleeping on other side or what. But now after listening to all these questions, I thought, okay, they were aware. They were. Yes, ma'am. So yes. nice. Thanks a lot. Thank you, ma'am. I hand over the session to Tushar, sir. Thank you, Seema ma'am. We'll be in touch with you in future. Sure, sir. Anytime. Yes, ma'am. Now I'm closing this session. Thank you, all the participants. Okay, thank you, sir. Okay, we bye. will meet on Monday. Participants, we will meet on Monday. Okay, bye, everyone. Bye. I'll leave, sir. Yeah. And this thing, feedback form is already shared. Tomorrow, we will be sharing another Google form for your information, certificate information. Thank you.